हेलो 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 कैसे हैं आप लोग? एच एक्स ऑलरेडी आके हाय भाई बोल चुके हैं, 1 घंटा नहीं 20 मिनट पहले आके बोल चुके हैं एच एक्स। नाइस टू सी यू भाई लोग। इट्स नॉर्थ लंडन डार्बी वीक एंड वी आर बैक on this channel. Why am I doing a preview today and not tomorrow? Well, tomorrow I'm flying to London, my friends. I have a job in the morning and उसके बाद से रात को I'm सीधा flying away to London for the weekend. And देखते हैं यार what happens at the North London Derby, if I can get it or not. I show speed is here. Congrats on Wout Weghorst bhai. Congrats on Wout Weghorst. Nice to see you guys signing some players. I hope Arsenal भी कुछ players sign कर ले यार. I was hoping North London Derby से पहले मुद्रिक आ जाएगा but नहीं हुआ भाई. Anuj, how are you man? I'm good, I'm good. की हाल चाल भाई? सब बढ़िया बिप्रा, सब बढ़िया. Nice to see you here as well. एंड हाउ आर यू ऑल? काफी लोग यूनिवर्सिटी से आ रहे होंगे, काफी लोग ऑफिस से निकल रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग अप. 1.5 के हो गए. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. संकेत इज हियर. हे संकेत, हाउ आर यू मैन? अमन इज ऑल्सो हियर. हे अमन. Yo Renisu. Renisu is here. Yes, I am lucky enough to be in London. I have to see, man. I have to see if we can, if I can figure out a way to watch the game somehow. Otherwise, if nothing else, I just watch the game in a pub or at my home. Thanks so much, Renisu. I'm trying. I'm trying. Sadiq Bhai is in the chat. Yes, Weghorst is desperate to be involved in the Manchester derby. Are that man, he has, this is his last big chance for a big club, right? He's going to be 31. अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? टिकट नहीं मिली. इनफैक्ट अभी लिटरली द रीजन आई एम 1 minute लेट वाज बिकॉज मैं एवर्टन गेम के लिए टिकट्स ढूंढ रहा था. एंड सोल्ड आउट. सोल्ड आउट. सब सोल्ड आउट हो जाता है भाई यहाँ पे आर्सेनल के गेम्स के लिए. आर्सेनल का आर्टवर्क देखा, आई लव्ड इट. हाँ भाई, विल टॉक अबाउट दिस एज वेल. But first, we will, since I only have 2 hours before I have to head to work, let's talk about the North London Derby. Or actually, let's wait for a few more people to show up and then we'll talk about the North London Derby. Let's talk about the artwork itself. भाई कैसा लगा artwork आपको? First, I thought India का कोई representation नहीं है, India का कोई flag नहीं है. Then a lot of people pointed out to me, Kerala Gooners, Nagaland, Mumbai, ये सारे गोवा वाले सब लोग were represented. It's so nice to see, man. मैं अभी दुष्यंत के चैनल पे था, लेट्स टॉक आर्सेनल. वी वर टॉकिंग अबाउट द आर्टवर्क इटसेल्फ एंड मैं उस पे बोल रहा था कि यार इट्स सो नाइस दैट द क्लब इज स्टिल स्टेइंग इन टच विद फैंस. अभी आजकल इतना कॉर्पोरेटाइज हो गया है फुटबॉल, with clubs and tickets and God knows who all. So it's nice to see fans being consulted, legends की families being consulted, women's team being given the respect they deserve. भाई Invincibles के side पे एक वो quadruple winning team भी थी. And it's really nice to see some great artwork. वो आई थिंक काफी पुराना हो गया था हमारा जो करंट आर्टवर्क है एमिरेट्स का. 8 साल 10 साल 10 साल से भी ऊपर हो गया भाई. आई थिंक 12-15 साल हो गए हैं. सो इट्स नाइस कि हम फाइनली कुछ रीजिग कर रहे हैं एंड इट्स ऑल नाइस. अमोघ द स्पर्स फैन इज हियर. नाइस टू सी यू हियर अमोघ. देंगे देंगे सब देंगे भाई, सब देंगे. सो Golazo is here. Hey Golazo edits, nice to see you again. Manchester United is going for Kyle Walker Peters. अरे आपके पास राइट बैक ही कहाँ है? डालो है, वैन बिसाका है. Kyle Walker Peters is not as good as either of them. Saurabh Felix is here. Hi Saurabh, how are you, man? Didn't like Vinay's comments that he's happy with the squad. Yeah, I think that's what he has to say, right? He can't say I'm not happy with the squad, because that's probably going to dampen the confidence of people who are there already in the squad. Arsene knows that was a great. George Graham का भी था भाई उसमें. Or its Spurs jersey may come before derby. Good luck to you, Amogh, man. It's going to be a great game. And despite my hate for Spurs, I hope that you have an enjoyable game to watch, at least for maybe those 10 minutes that Kane gets a penalty and he scores. But the score eventually will be 3-1 to Arsenal. Hello, how is it going? Hey, Eben, man, nice to see you. Didn't notice any Indian-based artwork in the new presentation. That's what I thought as well, Eben. But apparently the local supporters group in Kerala, Nagaland, Goa, and all these places, Mumbai as well, have been represented. Pune Gooners are also there. So instead of India, the flag,
they have the local supporters group from India that they have used to represent. I am good, Puran. How are you, man? Comedy guy, let's go indeed. Penalty is a must. भाई होगा यार. देखो, these are all um, big occasions before a North London derby where Harry Kane just shows up. Abhi he is one goal away from Greaves' all-time record of the Spurs' highest scorer. तो वो तो North London derby में goal मारेगा. And I won't be surprised if he scores twice in the North London derby this weekend. But that makes it all the more important for us to at least get 2 or 3 goals. Do you know any place for NLD screening in Delhi? Bhai, I have no idea. I have no idea. Any sports bar would probably do. Just figure out a sports bar, call them up and say कि सर आप आर्सेनल स्पर्स का गेम दिखाओगे. एंड साउथ दिल्ली में वसंत कुंज एरिया में काफ़ी स्पोर्ट्स बार्स हैं, उनमें देख लो. आई थिंक DLF प्रोमेनाड में एक दो हैं, उधर जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट. बाकी नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में कहाँ मेरे को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट भाई. मेरे को सिर्फ साउथ दिल्ली का ही पता है. 1886 forever, yes, that Highbury का जो artwork है, has been so good and accurate, man. Rival fans think they can make fun of us signing Weghorst. Ten Hag could decide Mia Khalifa to play for us and still won't complain. I trust my manager. You are now getting to that point how much we trust Arteta, my friend. I guess he's 2 goals away from 200. Yes, that also. Would you take Rafinha at 60 million if not Mudrik? I mean, yeah, that's what our initial plan was. So if Rafinha is available, why not, man? Why not? You'd miss the NLT because of work. It's okay, man. It's sad. I would say stay away from spoilers, although it won't be possible for you. Go to Reddit r/football highlights. Udhar watch the full extended highlights or the full match if you want to. Again, so it is what it is. But let's talk about the North London derby, guys. A huge game for us in the context of where our season is, and also in the context of the other games. Now, what are the other games? मैंने देखा ही नहीं है खुद actually. What are the other games in the league? But man, it's a good opportunity for us to go 8 points ahead of City momentarily. Whether they lose against United or they win against United, then it doesn't really matter. But we have to win our game, because if we lose and by any chance if City win against United, भाई ये 2 पॉइंट का गैप बहुत बहुत डेंजरस होगा. अपनी टीम को डाउन प्ले जबकि दे आर टॉप ऑफ द लीग. नाइस, आई लाइक. भाई योगेंद्र सिंह, दैट इज हाउ यू प्ले इट, राइट? यू एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू नेवर बी डिसअपॉइंटेड. इफ आई ऑलवेज वेंट ऑन टू भाई हमारी टीम तो ऐसी ही है, हम तो टाइटल जीतेंगे, then you start getting disappointed when they don't play well. What the fuck, Rafinha नहीं देने वाले बारसा, don't believe everything you read. I just thought he just asked me कि will you take Rafinha, and I was like, I'll take Rafinha. If somebody asks me will you take Messi, doesn't mean PSG is selling Messi to Arsenal. I'll just take Messi at right wing, of course. Um, Not included in this game week. Are they not included in this game week? Let me see. Are you talking about FPL? Because I don't know, man. I think, yeah, you're right. It's not included in this game week. I think it must be a game which they are playing जो पहले पोस्टपोन हो गया होगा, समथिंग और द अदर. यस, वो भी लंदन डर्बी है. बेंटन और Kulusevski back at the training. Hopefully they'll be fit. I hope they are rusty as hell, man. Amogh. I don't want them to play really well, but it is what it is, man. They are firing arc to other clubs. Yes. क्या है यार, ये करना तो पड़ता है. हाँ, वो गेम वीक 7 का ही गेम है, सो मे बी इट्स अ गेम दे डिड नॉट प्ले पहले. बट छोड़ो, वो सब देख लेते हैं हम. आज है स्पर्स एंड चेल्सी फुलहम का गेम. जाओ फीलिक्स मे बी विल प्ले फॉर चेल्सी. दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. खैर, so let's talk about the North London derby first. Lineup wise, who would you want to see in the lineup? मैं honestly बताऊं दोस्तों, I would go for an unchanged lineup that we played against Newcastle. You have Zinchenko there at left back. That is the only controversial position that everyone has in every game, whether we play Tierney or Tomiyasu or Zinchenko. I think we play Zinchenko. Now that Kulusevski is back, थोड़ा wing पे vulnerability रहेगा, because yeah, of course it's fucking Kulusevski, man. He's really really good, and he is a creative force for that Spurs team. पहले तो ब्रायन हिल को खिला रहे थे अभी तक पिछले गेम वीक में. So all the creativity had to come from Perisic getting the ball to Kane's head or Kane himself dropping deep and giving assists. But I think कुलुसेस्की के आने के बाद एक काफी डिफरेंट स्पर्स मिलेगा, एंड हमारे साथ हमेशा यही होता है भाई. The good news is Richarlison is not going to be there. At least that's what the news is for now. Um,
बट आई थिंक जिनचेंको हैज टू प्ले. व्हाई? बिकॉज बेंटनकुर अगर वापस आ गया है और हॉयबर्ग अगर मिडिल में खेलेगा, then the only way to get around them is to overload that midfield. And overload कैसे करोगे? It's not just through Xhaka and Partey, but Odegaard को भी खेलना पड़ेगा and Zinchenko को भी मिडिल में आके. You simply have to bypass that two-man midfield, dude. उनके पास और कुछ है नहीं. देखो, they'll play a 5-2-3 where तीन उनके डिफेंडर्स, दो विंग बैक्स, कुलुसेस्की और सॉन ऑन द विंग्स, केन ऑन द मिडिल. बस उनके मिडिल में दो है. So it's like a fucking polo, dude. And if you can control that midfield ना, then उनका सारा आई थिंक क्रम्बल कर जाता है एंड देन यू कैन फोर्स देम इनटू अ लो ब्लॉक. देखो, ये गेम कैसे जाने वाला है? ये गेम ऐसे जाएगा कि स्पर्स will sit back and Spurs will absorb as much of the pressure as possible. ये स्पर्स की कहानी है भाई. They will they have been playing like this for the past few games. Now I don't know it was because कि कुलुसेव्स्की नहीं था तो उनको ऐसे ही खेलना पड़ा और बेंटनकुर नहीं था एक दो गेम के लिए तो उनको ऐसे खेलना पड़ा. But I think that is the Spurs style. Absorb pressure, hit on the counter and score a goal, and then sit back again and then hit on the counter and score a goal. ऐसा नहीं है कि स्पर्स नहीं कर सकती हमारे अगेंस्ट. स्पर्स आर वेरी केपेबल. देव डन इट अगेंस्ट सिटी सो मेनी टाइम्स भाई. तो हम क्या चीज़ है, राइट? देव डन इट अगेंस्ट चेल्सी. चलो किसी लक से उन्होंने ड्रॉ जीत लिया था जब उन्होंने कुकरेया के बाल खींच लिए थे. सो आई थिंक कंट्रोलिंग दैट मिडफील्ड इज गोना बी की. इफ दैट मीन्स दैट हम कुलुसेस्की को थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस दे, सो बी इट भाई. Yes, Odegaard is player of the month. Odegaard वापस करो, but happy to see him playing well. यार अमन, I just think कि Odegaard plays well in this system. If he went back to Madrid also, I don't think he'll play as well because Madrid का system ही अलग है, हमारा भी system अलग है, हमारा सब कुछ Odegaard के थ्रू जाता है. Madrid में you have so many options. आप wings से play making करते हैं, चाहे आपका वो रोड्रिगो हो गया, चाहे आपका फेडे हो गया, चाहे आपका विनिशियस हो गया. Um, okay, Twitter threads growing around with Arsenal's interest in Rice, with West Ham struggling, probably the best time to get him. Nahin, dude, I think when a team is struggling, they still try to maximize. 100 million. 100 million से ज़्यादा में जाएगा, dude. I think, I'll be honest, dude, since that Anthony wala thing na, since that Anthony wala deal, everything's gonna get fucked. Okay? I don't blame United for overpaying for Anthony, but they did overpay for Anthony. And उसके बाद से भाई, everything is gonna get screwed. Okay, let me take some comments. Double game week था last time. मुद्रिक को लाना चाहिए था एनएलडी से पहले. That's what I wanted, Renisu man. First 11 self-explanatory nowadays. Yeah, I think we're a momentum team. एंड आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट यार, हम भी देख रहे थे. गेम वाज सो बोरिंग बिकॉज फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स एक दूसरे को जानते नहीं है, फर्स्ट टाइम एक साथ खेल रहे हैं एंड जनरली खेल ही रहे थे अपार्ट फ्रॉम अ फ्रंट थ्री. तो जब फेमिलियरिटी होती है देन वी ब्रीड कॉन्फिडेंस एंड दैट ब्रिंग्स अस विक्ट्री. आई थिंक जितना हम सेम लाइनअप रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा. आर्सेनल सेकंड टीम टू प्ले अगेंस्ट अस. चलो आपकी विश है भाई. हे बैंग बैंग, हाउ आर यू मैन? नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू. ये हो गया है. बिप्रा says Rambo, Benny Blanco, Willow, Gabby, Zinni, Partey, Shaka, Odegaard, Martinelli, Saka, and Ketin. That's my starting line. I think that's pretty much everyone's starting lineup, to be honest. Can United win the Carabao? Carabao नहीं पता. Carabao जीत सकते हैं, but it honestly depends on. अभी next आपका game Southampton के है, किसके जिसके भी against है भाई. अभी you still have to play. I think if I'm not mistaken, you still have to play. Newcastle is still in the tournament, na? Newcastle will be a good matchup for you because they are also hungry for a cup, man. So you never know. You never know. Um, Dyer will win it for you. I think Lloris will win it for us, my friend. Lloris is your weak point, I think. Our CBs need to be on their toes with the high line. Bro, more than that, man, they need to be on their toes because Perisic keeps finding Kane's head somehow. Perisic is amazing at crossing the ball, and now they have fucking Kulusevski also, who can do it. So whether it's crossing, whether it's low crosses, whether it's dribbling, our defenders need to be on top. Hey MZ, nice to see you. Are Lisandro Martinez. Yeah. Okay, got a feeling Patino will be our next DM. Looks like it, man. I won't be surprised, but I think another loan for him is in order. Won't change anything right now. True. I hope we dismantle that cock. That's what she said. Odegaard or Martinelli. Oh, is that your pick, man? I think, well, first of all, both of them will play. If it comes to the key player, I think Odegaard's going to be the key player. Although I think Martinelli will take the first shot, Lloris will spill it, and Nketiah will score. I think that's one. I'm happy that he's there. Of course, man. Of course. Everyone.
I've seen so many Madrid fans be happy that he's playing well because everyone saw his potential. Arsenal fans are, of course, happy that he plays for us. Dumfries to Chelsea, watch this space. Man, I have just no idea what's happening with Chelsea. मुद्रिक को शख्तर 100 अगर 100 मिलियन ही देना था तो राफेल लियो जैसा प्लेयर को लाओ. Rafael Leao, yeah, I think he's a very hot and cold player. I personally don't think Rafael Leao will cut it. My thoughts on Manchester Derby, it is only a win-win for us. As long as we win the game against Spurs, it is a win-win for whoever wins. If City wins, then Manchester United ki humbling ho jayegi. That's good. Um, Always important for us, for Manchester United to halt some momentum before we play them next week. And agar United jeeti, then again a win for us because that means we gain some points on City, and then the result against United becomes a little less precarious and a little less important, you know. So if United beat City and then United beat Arsenal, um, I'll be at peace. I'll be okay. Viva Arsenal, Viva Arsenal. Do you think Eddie 14 will be break through Spurs defense? I don't know. He'll be breaking through Spurs defense, Soham. But I think what will happen is that he will be there to poach the ball. Spurs में Lloris has this ability to spill the ball really a lot. And अगर आप उसके जोर से शॉट मारो, or if you take a shot very quickly against him, he can sometimes spill it. एंड उसने पिछले नॉर्थ लंदन डार्बी जब हमने होम पे खेला था तभी भी स्पिल करके गैब्रियल जेसस को गोल मारने दिया था. एंड आई थिंक उसने पिछले कुछ गेम्स में भी बॉल स्पिल करी है. सो एस्टन विला के अगेंस्ट भी था आई थिंक. So it's good enough for us, dude. I think Eddie Nketiah will get on the score sheet. And Anthony is young. I hope he improves. Listen, as much as he can improve also, yeah, unless he is Cristiano, Neymar, Vinicius, Messi level, you're not going to make a profit. And that is why I think you overpaid for him. Hey, A3, how are you, man? Nottingham ke against. Good, 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 good. We have to face Forest. Yes, yes, yes. Again in the Carabao. Yes, Perisic keeps finding Kane's head. That's the only annoying part of this. Kulusevski, the man to watch out for. That is true. Game is crucial for confidence. Either could be W or draw. Can't afford to lose. We should not lose by Ashutosh. Losing this, and if City win, will be very precarious. Because then, against United, a team which is on form, it becomes fucking do or die, man. Dekho, we knew this string of games going to be a really tough, the toughest. If we win against Spurs and if we win against United, I think my probability for us winning the title will go to 70%. Simple as that, 70 to 75%. Yes, Kulusevski is the part tail. Yeah, this is what Dushyant was also saying. Yeah, long range shooting बहुत crucial होने वाली because Spurs घुसी रहती है अपने बॉक्स में. तो यार हमें ये लॉन्ग रेंज वाला कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक दे विल बी गार्डिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस टाइम कि पार्टे को उतना स्पेस नहीं देंगे शूट करने का. मड्रिड को क्या हो गया? टू बी ऑनेस्ट भाई, आई डोंट फॉलो ला लीगा, सो आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ है मड्रिड को. Everyone think it's Odegaard or Martinelli, but I think Saka will show his class. I think, yeah, man, Saka against Perisic will be very interesting. Saka against Longley will be very good. Good chance to embarrass both of them. Anthony और मुड्रिक, अभी मैंने मुड्रिक को प्रीमियर लीग में देखा नहीं, so I can't really say. Vegas to Man U, yes, here we go, हो गया है. United are playing Crystal Palace midweek before us and they have zero squad depth. They'll be tired against us. Yeah, it also depends ना कि if there is no FA Cup replay, जो हमारे केस में भी हो गया, they might move the Everton game आगे थोड़ा सा, so you never really know. If we beat City and then we beat Arsenal, then 21 isn't coming. No, I don't think so. I think that's a little premature, dude. Pratyaksh, jokes aside, I think United are a good team, but I just don't think you have the squad depth. Just like we don't have the squad depth to win the title. Simple as, simple as. But United right now is in a great space. I think it is the best chance for them to get Champions League. And Weghorst ले लिया ठीक है. I think you're a couple of signings away from seriously title contention. You are in a good form, but again, I still think, genuinely still think, there are at least 3 to 4 teams that are better than United right now. 3 teams for sure. I think Newcastle right now are better than United. I think we are better than United, and I think City are better than United. Even if you beat City and even if you beat Arsenal, that's huge for you. But I still think, in overall throughout the season, those 2 teams have been better than United. I really miss Odegaard. Happy for him. If we win our games against City and Palace, we're going to stand with 41 points. I know. My top 4 predictions, as I've given multiple times, is City, Arsenal,
Newcastle, and then one of Liverpool or United on fourth. I don't know which one. I think Liverpool will have a resurgence faster than most people anticipate. I think February onwards, Liverpool will start kicking on and they'll start winning their games. Simple as. They have too many good players. They have too many individual quality, and they have a great player in every part of the pitch. They have Allison in goal. They have Van Dijk at the back. They have Thiago in the middle. They have Salah, Jota, Nunes, Diaz, गैक्पो इन द फ्रंट एंड इनमें से कोई भी मिडफील्ड में डेप्यूटाइज कर सकता है भाई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये 4-4-2 खेल लेंगे ना, इनका मिडफील्ड इतना सॉलिड हो जाएगा। इनका सेंटर ऑफ मिडफील्ड इज द ओनली इशू, सिंपल एज दैट। बट आई थिंक लिवरपूल की रिसर्जेंस इतनी होगी, आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। एनी चांस फॉर स्पर्स टू विन द एफ? इन नो चांस, दे आर एलर्जिक टू ट्रॉफीज। ओके अमोक, सिंस यू आर अ स्पर्स फैन, आई विल बी फेयर, I just don't think you have been playing really well. If you saw that game against Portsmouth, आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ में फिर से कुछ खास नहीं हुआ. It took Harry Kane to drop down in the middle for you two guys to score. And I think वही है. You just don't. You're not, either Conte does not have the players he wants, or you're not playing to the best of your abilities. Okay, Eddie के I have confidence because Spurs कुछ खास नहीं खेल रही, but away game है that to smoke the Palace last week. Kane goals पहनचोद फिर मारेगा. Kane 2 गोल मारेगा. मेरे को लग रहा है 2-2 स्कोर होगा. Ideally, I'd want for a 2-1. Would Arteta go all out attack at Spurs, or would be defense? I think he'll go all out attack. Because if there is one thing that Arteta likes is to be brave, and I don't think he cares कि हम किसके against खेल रहे. You saw that game against Liverpool we played. First minute में गोल मार दिया था हमने. And I think that's something that we were expecting against Spurs as well. पहले 2-5 मिनट में गोल मार दो. Although I think 15-20 मिनट लगेंगे, but I think we'll score first. I still think Spurs will equalize and maybe even take the lead. It'll be up to us whether we draw the game or we win the game and keep Spurs at bay. I would be happy if we can completely shut down Spurs and have a clean sheet and 1-0 be हम जीत जाए ना Spurs के against, will be huge because no away team has won the North London Derby since 2014. So that is 9 years now coming up. तो भाई ये record, it is the best time to play. देखो Liverpool के against Arsenal have not been playing very well, but last time when we played Liverpool and we beat them, that was the best time to play this Liverpool team. And same with Spurs भाई. अभी नहीं खेलेंगे अच्छा तो कब खेलेंगे, right? I think this is our best team and I think this is their worst team. And even though form goes out of the window when it comes to the North London Derby, I think अभी उनको हराना बेस्ट है. लिवरपूल वर्सेस चेल्सी थॉट्स, ये कब गेम है यार? अभी तो फुलम है ना. देखते देखते सब थॉट्स देंगे, सबको थॉट्स देंगे. Odegaard player of the month, yes. Daksh bhai, I just hope Arsenal Bank City hard an FA Cup W situation for United. देखते हैं man, देखते हैं. देखो, I personally have no feel. I mean, we won the FA Cup a lot of times and it's a competition we should take seriously. But considering how we played last game, na, I am not too optimistic. Troubled by injuries, I think they've just been unlucky, man. I don't think they've been bad. They've just been unlucky. How come not Spurs in top four? I don't think Liverpool is going to get above us anytime soon. I think for Spurs to be in top four, a lot of things have to go right for them, plus a lot of things have to go wrong for other teams. I just think United right now are in a better form than Spurs. Newcastle are in better form than Spurs. City are definitely in better form than Spurs, and Arsenal are better forms than Spurs. So I think that is why I would not put Spurs in top four. Amog, I know you're a Spurs fan, but I'm not trying to make fun of you or your team. I genuinely think there are 4 teams at least better than Spurs. I would not put Chelsea in top 6 because I think Chelsea से बेटर 6 टीम है इस लीग में अभी. But it would be huge for our confidence. Yes, I think getting third also will be huge for you guys. Getting a trophy will be astronomically great. Yes, VVD is injured, I understand, but he will come back again in a couple of weeks or a month and he'll be fine. It's okay. Good transfer window for Spurs, but you've spent a lot and you don't have. Dekho, my problem with that is Conte is not committing his future to the club, right? So why would you spend 100 million for a guy who might not even be here? So let's see. Let's fucking go and win the match, boys. Yes. Okay. How happy are you seeing City's performance as a City fan? I feel this was our worst performance under Prep since 3-0 versus Liverpool in 17-18 and 4-0. Shambolic. I think you're just used to such a high standard that anything which is not perfect, you will obviously find shambolic. But I think it's also question of you trying out new lineups, you trying out new players. Sergio Gomez खेल रहा था I think left back पे. And ठीक है यार, I mean देखो, कोई टीम अनबीटन तो नहीं जाती फुल सीजन. आई एम नॉट सेइंग लीग, आई एम सेइंग फुल सीजन. आप कहीं ना कहीं तो मैच हारोगे, राइट? एंड आप मैच हारोगे तो इट विल बी बिकॉज यू डिडंट प्ले टू वेल.
So it's okay. I think it's a one-off game, man. You have the quality, you have the depth, you can change up anything, everything, whenever you want. So I won't take it too hard. Of course, if your aim was to win the FA Cup, it can be a little disappointing. But yeah, reports say Conte won't leave Spurs until he wins a trophy. Then he'll be buried in the Spurs ground, bhai. बुड्ढा होके मर जाएगा. Okay. Can Arsenal fall down? Of course, we can. It's possible for any team to fall down with time. You see how good Liverpool have been for the past few years, and you see them this year. They've been unlucky with injuries, like I said, but you see them falling down. You see how bad Arsenal and United were last season, and you see how good they are. Both of them are playing this season. So yeah, Arteta is really pragmatic. Exactly. He's going to be attacking. He's not going to be pragmatic. Who is playing RB for Spurs though? Royal. I hope it's Emerson, but it's most likely going to be Doherty, man. Can we see Arsenal go down? If you're talking relegation, nahi. Mathematically we're safe. One touch football against defensive sides. If we keep the ball on our feet, then we will see result against Newcastle. I think that when the way Spurs plays Mohit, there are few options which are off the table now. We can't cross the ball all the time. They'll just clear it and we'll lose possession. We can't um pass it too much around them because वो बैठे रहेंगे अंदर उनको तो पास से फर्क नहीं पड़ेगा and then it will just be the donut of sadness जब एक साइड से दूसरी साइड पे बॉल जाएगी. The only way to beat Spurs is take them on, dribble past them, जो गैब्रियल जेसूस ने लास्ट नॉर्थ लंडन डर्बी में किया था. मार्टिनेली एंड साका के ऊपर आएगी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और of course you also use set pieces. We are really good at set pieces. Utilize Gabriel की height, Saliba की height. Important है set pieces इसके लिए. And of course final option तो बचता ही है पार्टे जैसे long range bangers मारना. But yeah, you're right. We can't keep the ball on our feet for too long. But वही है यार. लो ब्लॉक के अगेंस्ट ना प्रॉब्लम ये होती है आपको पासेस बिल्कुल परफेक्ट करने होते हैं क्योंकि आपका पास अगर अंडर हिट हुआ तो डिफेंडर ब्लॉक कर लेगा, ओवर हिट हुआ तो कीपर कलेक्ट कर लेगा. सो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, बट आई थिंक वी हैव द एबिलिटी टू बीट देम. When is Reese coming back? I think a couple of weeks. After Brentford and Brighton game, everyone thought it was downfall, but it was the beginning of new era. Brentford. Oh, you're talking about United. Okay, okay, okay. यार ये तो हमेशा ही होता है ना. देखो लास्ट सीजन हम भी 3 गेम हारे थे एंड देन वी एंडेड अप इन टॉप 4 एंड देन वी लॉस्ट आउट टॉप 4 एंड सबने सोचा खत्म हो गया. तो बस वही है यार. आई थिंक सब में एक डाउन के बाद एक अप आता है और उस अप के बाद थोड़ा डाउन आता है एंड यूनाइटेड विल हिट दैट ब्रेक. ऐसा नहीं है दैट यूनाइटेड आर अ मिरेकल टीम दैट विल अवॉइड डाउन फॉर्म. ये सबके साथ होता है. आर्सेनल के साथ भी हुआ था यार. हम 3 गेम्स इन अ रो हार गए थे आफ्टर सच अ गुड आफ्टर बैड स्टार्ट देन हैविंग अ गुड season and then having 3 games off and then पता नहीं बहुत. So there will be an odd game where you might lose to an Everton. There might be an odd game where you might lose to a Brentford. There might be an odd game where a Fulham might upset you or draw to you or whatever it is. There might be unfortunately God forbid आपके किसी क्रूशल प्लेयर को इंजरी हो जाए जैसे हमारे पार्टे को हो गई थी इंजरी खत्म हो गया था हमारा सीजन. तो यार वही है. Which fan would you have been if not Arsenal? Real Madrid. Let away perfect. Zero shots on target, too many failed touches, stray passes, not much concern, but the playing style was shite. Gomez and Phillips got a reality check, low level. I think they'll take time, man. They've just joined the team, right? Calvin Phillips and Gomez. यार देखो दोनों को खेलने का मौका ही कहाँ मिलता है. ठीक है. उनको अभी तो इंटीग्रेट होना है. आपके पास ऐसे थोड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, विच हो गया. स्पर्स कांट विन अ ट्रॉफी अनलेस दे रिमूव चोकन, सन एंड केन. भाई नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दे आर चोकर्स, बट या. Don't you think Spurs fan base was overhyped? Oliver Skip, he is such a mug in the Portsmouth match. I think there have been very few quality signings that Spurs have made. So it is possible. What you're saying is correct that they overhyped Oliver Skip. Troy Parrott को भी कर दिया था यार उन्होंने तो. Newcastle tried to press us in the first and we bombarded them with shots. Sitting back is the way to defeat us. Sitting back and fouling us and breaking our momentum. If we don't get to play, we don't score. Simple as that. Yes, Cancelo's drop is something that has been concerning. He has looked half the player he was earlier in the season. Yeah, that's true. Set piece defending has improved and that could benefit us considering Spurs have very good set piece record against us. I think that set piece record against us is only because of Kane, dude. He just knows where to be all the time. And of course, let's not forget last time भी हमने set piece से goal concede क्यों किया था? Because Cedric ने छोटा सा धक्का मार दिया था सॉन को और रेफरी ने उसको पेनल्टी दे दी थी. टेना को देखकर अलग वाइब्स आता है भाई. आई होप बोर्ड विल बैक हिम.
क्वालिटी कोचिंग आपको हमेशा दिखेगी. आप It might not work instantaneously, but आपको दिखेगी. Do you expect something miraculous at the end of the season? For example, any other team winning the people, maybe Newcastle or United. मेरे को पता है United बोलना चाहते. Just asking. I know it's not possible. I'll be honest, guys. It's very nice to live in dreamland. My dreamland is Arsenal winning the title. But I know, most fans know that City have the quality to win the title. Now, can any other team break into top four? I think so. I think there's a good chance Brighton does. I think there's a good chance Spurs can also do it. You never really know. देखो यार, फुटबॉल कब चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, एंड ये सिर्फ एक दो कारण की वजह से नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चेंज हो जाए. So you never really know, man. I think City is winning the league and we may finish third or fourth. Only Yesar and Tomiyasu are qualities on the pitch, not good enough. That is what, Nirman. We just don't have the quality or the personnel to change game. जैसे अब मानव जैसे कह रहा था, ये लोग गंदा खेले, ये लोग गंदा खेले. आप गंदा खेले होंगे बट यू हैव ऑप्शंस, राइट? कि आपका मान लो राइट बैक अच्छा नहीं खेल रहा है तो आप काइल वॉकर ले आइए. आपका सेंटर बैक आज अच्छा नहीं खेला तो आप डियाज को ले आइए. डियाज अच्छा नहीं खेला तो स्टोन्स को ले आइए. स्टोन्स नहीं तो कांजी और आके तो भरे पड़े हैं. मिडफील्ड अच्छा नहीं है, चलो आज गुंडोगन को खिला लो. आज नहीं तो रॉड्री हो जाएगा. रॉड्री नहीं तो डेब्रॉयने तो है ही है. वो नहीं तो बर्नार्डो को खिला लो. लेफ्ट पे फोर्डन को खिला लो. आगे हालैंड. हालैंड नहीं तो जूलियन को खिला लो. राइट विंग पे तो मारिस है ही आपका. सो यार मतलब आपके पास इतनी क्वालिटी होती है, हमारे पास वो नहीं है. हमारे पास एक प्लान ए है एंड वी होप कि हम वो प्लान ए बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट करें और गेम जीत जाएं. प्लान ए काम नहीं करा, जैसे न्यूकासल के अगेंस्ट काम नहीं किया. हम क्या कर सकते थे? हमने राइट बैक को सब्स्टिट्यूट किया, टॉमियासू को. राइट, टॉमियासू को ले आए. दैट डजंट चेंज द गेम. दैट कैन मेक यू डिफेंसिवली सॉलिड बट अटैकिंग में इट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग. स्मिथ रो आ गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज है. मे बी मुड्रिक आ जाए एक दो हफ्ते में, सो मे बी दैट विल ब्रिंग अ लिटिल चेंज. बट this does not bring any change to us, bhai. So it's you cannot win the title with Eddie Nketiah. As much as I love Eddie, you cannot win the title with him. I never thought Arsenal fans are humble. In Twitter, they are just toxic. Arey yaar, this is for every fan base, right, Sachin? You go into any आपके पास ट्विटर कम्युनिटीज का ऑप्शन होगा, आप किसी भी क्लब का नाम लिख लो, आपको इतने टॉक्सिक लोग मिलेंगे, तो होते ही हैं. Cancelo and Bernardo shocking for Portugal. Same goes with KDB. Makes me question are they good enough players play under Pep. I think Pep system brings out the best in players. He has a very specific system जिसमें Odegaard इतना amazingly fit करेगा, मैं आपको बता नहीं सकता. तो देखते हैं. Troy Parrott was hyped in 2019. True. Real Madrid struggling. They need midfielders. यार आपके पास है तो midfielders, चुआमेनी और कामाविंगा और कौन है आपके पास midfielders. आप बस टाइम दो थोड़ा, तो यार डिप तो आएगा ना. अगर आप एक चलती फिरती गाड़ी के पुर्जे बदलोगे विद डिफरेंट पुर्जे, तो उसमें थोड़ी तो हिचकिचाहट आएगी. आपको थोड़ा तो एडजस्टमेंट पीरियड देना पड़ेगा. फॉर श्योर मैनी टू बी. आपने 100 मिलियन दिया यार बंदे के लिए और आप कह रहे हो उसके बाद आपको मिडफील्डर चाहिए? कैसे हो सकता है यार ऐसे? मतलब my prediction is Arsenal win the derby game 3-1. I think it'll be 2-2, but okay. Odegaard, Martinelli scoring for sure. Kane from the other side. I think 2-2 hoga, but it should be 2-1 ideally. I think Nketiah will score the first goal, and I think Smith Rowe will score the second, and Kane will score a penalty. Last year corner से Kane का score रहा था. Replay में देखा Eddie was marking Kane. That match was shambles. अरे छोड़ भाई. Daksh bro, in which position you want a player the most? I want a center midfielder, except Mudrik. Name a player which you want Arsenal to send. Declan Rice. We have scored most of our goals from set pieces and all competitions. True, we have defended them well, and you are a very big threat from set pieces. Liverpool review, Denge. Calvin Phillips needs time. Being CDM under Pep requires a lot. Not fit or is one of the main reasons. यार वो तो यार देखो, काफी सारे प्लेयर्स ना भ्रम के साथ आते हैं कि अब इट्स गोना बी इजी. यू सीन दैट ग्रेलिश इंटरव्यू वेयर ही सेड दैट ही थॉट आई विल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स एंड असिस्ट्स, बट यू केम अंडर पेप एंड ही रियलाइज्ड हिज रोल इज सो डिफरेंट. Southampton on City losing. Your thoughts on City losing to Southampton? Southampton does this from time to time, man. They held us to a draw and they beat City in the FA Cup. Just fucking imagine, bhai. Nobody could beat City. Okay, na Klopp, na Potter, ना कोई और मैनेजर. फकिंग नेथन जोन्स बीट पेप. Hi bhai, any update from Mudrik? No update, my friend. No update. Is it because Champions League there are no targets of Arsenal? Nahin. If you hear Vinay Venkatesham say, he said that if the what will make sense if the player can improve, which I think everyone believes at Arsenal that he can improve Arsenal, and if the price is right. So you never really know, dude.
ये ना बहुत सारे चल रहे हैं, कोई सरना को कुछ चाहिए, ओनर को कुछ चाहिए, मुड्रिक को कुछ चाहिए, जो भी है भाई, अब कुछ कर नहीं सकते। मुड्रिक की स्टोरी में वो अपनी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे जिसमें आर्सेनल की जैसी फोटो I have no expectation from my team this season except for Carbo. I expect us to beat Nottingham, Newcastle, Southampton, and beat. I don't think United will get top four. I think you might get top four. Thanks, Sachin. Thanks so much, bhai. Guys, if you haven't liked the video, please like the video, bhai. It's very important for me. It's very essential for me that you like the video. It promotes the video, makes it a little more visible in the sea of Indian creators. आपको तो पता ही है कितने Indian creators हैं, कितने different clubs के. I intend to be Arsenal ka one of the biggest, if not the biggest. So your likes help me a lot. Um, as for the Carabao, you can win it, but I think Newcastle are also as hungry as you to win a trophy. So I think that's going to be a very difficult game. Um, सबसे बड़ा ट्रे अरे यूनाइटेड यूटीडी ट्रे भाई क्या है. Hey Ayush, how are you, man? uh you are also Barca fan too. I like Barca. I liked peak Barcelona bhai. That team was legendary. But if I had to follow a club, I would only follow Madrid bhai. Madrid, I like Madrid dude. What a club, what a club. At least now make you a mod. Yes, okay Ashutosh. Now that you've asked me so nicely, I will make you a mod. Hold on, let me find, where is it? Ashutosh, yes. मैं गलती से आपको टाइम आउट पे डालने वाला था. कंग्रेचुलेशन आशुतोष, योर मॉड कमिंग आलबाचुआ में लुकस वास्केस इंजर्ड. सो अरे तो वही है, तो इंजरी तो सबके पास होती है. आप थोड़ी 80-80 मिलियन के प्लेयर लोगे, हर टाइम आपको कोई प्लेयर लुढ़क जाएगा. या ही थ्रू अवे, आई थिंक ही ओवरथॉट अ लिटिल बिट. खैर, ओके ओके, देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स भाई. ऐसे चलता रहेगा तो मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा और मैं बात नहीं कर पाऊंगा. ओके, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट एंड लेट मी टॉक टू यू अ लिटिल बिट. ठीक है. काम आसान कर दिया साउथहैम्पटन ने. चलो कंग्रेचुलेशन साउथहैम्पटन भाई. Okay, so I think it'll be. Arey, Manish is also here, bhai. Manish is also here. Nice to see you, Manish. Um, okay. I just think ये गेम में कुछ कुछ की मैचअप्स हैं. पहली बात, कंग्रेचुलेशंस टू मार्टिन ओडेगार्ड, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ. वेल डिजर्व्ड, आई थिंक गाइस. आई थिंक वी ऑल कैन एग्री that इस महीने Casemiro and Rashford were close competitions to Martin Odegaard, but considering Arsenal का record in the past in that month, plus Odegaard के goal scoring form plus assists, I think Odegaard has simply been a step above the rest. Not to say Casemiro hasn't been and Rashford haven't been, but I just think Odegaard was a little better than them. Simple as that. बंदे ने असिस्ट मारे, बंदे ने पासिंग करी, बंदे ने गोल्स मारे, एंड बंदे ने एक्चुअली कैप्टन ऑफ आर्सेनल को एम्बॉडी करा है. अगर आपने आर्सेनल का आर्टवर्क देखा है, उसमें हमारे इतने ग्रेट कैप्टन्स हैं. एंड आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड, वी आर लकी टू हैव मार्टिन ओडेगार्ड एज कैप्टन भाई. काफ़ी सारे टीम्स इतने लकी नहीं होते टू हैव अ ग्रेट कैप्टन. यू वुड हैव जॉन टेरी एट चेल्सी, यू वुड हैव मार्टिन टोनी एडम्स एट आर्सेनल. इतने सारे अच्छे, बहुत कम टीम्स में अच्छे कैप्टन्स होते हैं दैट कैन लीड द टीम. आई थिंक हेंडरसन इज अ ग्रेट कैप्टन एज वेल. लेट्स नॉट फॉरगेट यूनाइटेड में चलो मगवायर है अभी, दैट्स अ लिटिल डॉजी. बट other than that, yeah, I think Odegaard, I think, has been on song, bhai, and I think he's going to be very key against breaking this Spurs defense. Yeah, he will be key in unlocking Saka and Martinelli and even Eddie, bhai. um I don't know कि क्या स्पर्स हमें प्रेस करेगी. उनके प्ले स्टाइल में तो लगता नहीं है दैट दे आर अ टीम दैट प्रेसेस. बट अगर वो लो ब्लॉक खेलेंगे, डू यू थिंक वी हैव अ बेटर चांस टू विन और नॉट? बिकॉज अब टाइम आ गया है, टीम हमारे साथ लो ब्लॉक खेलेंगे. कैन वी बीट लो ब्लॉक्स? आई थिंक वी कैन. आई थिंक ईजियर फॉर अस व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ द बॉल, बिकॉज जब हमारे पैरों पे बॉल होती है हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. जब हम प्रेस हो रहे होते हैं, जब कोई इंटेंसली हमें रोक रहा होता है, देन वी स्ट्रगल. एंड आई थिंक न्यूकासल ने वो हमारे साथ बहुत अच्छा किया. I think referees की choice is a little shocking. Fucking Pawson and Paul Tierney. Paul Tierney was the one who gave that penalty in that Spurs wala North London derby. Horrible, horrible. So I don't expect us to get a lot of decisions in our way. But I just think कि
I just think Odegaard is going to be the key player. Who is going to be the key player for Arsenal and Spurs? For Spurs, I would say it's Kulusevski, man. बंदे के आते ही Spurs look a different team, no doubt about it. They play different. They have another creative outlet. Creativity बढ़ जाती है यार Spurs के, and I think that is the biggest thing that's holding Spurs back. क्योंकि creative outlet इतने limited हैं. ठीक है, हमारे पास भर भर के क्रिएटिविटी नहीं है, बट हमारे गोल्स इतने अच्छे से स्प्रेड होते हैं और असिस्ट इतने अच्छे से स्प्रेड हुए हुए हैं. साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड सब 7 गोल असिस्ट पे हैं. एंकेटिया भी ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया. तुम्हारे फ्रंट फोर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जाका इज गेटिंग गोल्स, जाका इज क्रिएटिंग असिस्ट्स. बेन वाइट से आ रहे हैं असिस्ट. तो यार आई थिंक आर्सेनल की टीम ज्यादा बैलेंस. आई थिंक व्हाट होल्ड्स स्पर्स बैक इज द फैक्ट कि यार स्पर्स के पास Kulusevski or Bentancur nahi ho na, then they start getting hamstrung, and then Kane has to drop so deep and start creating stuff. For Spurs this time, Sonaldo, and for Arsenal, Saka and Martinelli. Yeah, I just think personally, Son has not been in great form, but he doesn't need form to score goals. देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, सॉन का मुझे लास्ट टाइम नॉर्थ लंदन डर्बी में बहुत डर था, बिकॉज हमारे खेलने से पहले उसने 4 गोल मार दिए थे, हैट्रिक मार दी थी लेस्टर के अगेंस्ट. गैब्रियल विल बी की पेनल्टी नहीं देना. भाई मेरे को तो लग रहा है सलीबा ज्यादा पेनल्टी देने के डेंजर में है गैब्रियल से. गैब्रियल हैज बीन सॉलिड दिस सीजन. उसने 1-2 पेनल्टीज दी हैं, उसने 1-2 मिस्टेक्स करी हैं, बट सलीबा सिंस द वर्ल्ड कप हैजंट बीन ग्रेट, राइट एनएसू. सो आई पर्सनली थिंक I'll be more concerned about Saliba giving a penalty or doing something stupid or rash. But अगर आपने आर्सेनल विजन पॉडकास्ट सुना हो तो सलीबा के ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट दिया था. उस पॉडकास्ट पे उसने बोला था कि जैसे आर्सन वेंगर थॉट दैट सोल कैम्बल, आर्सेनल लेजेंड सोल कैम्बल, नॉट स्पर्स लेजेंड, सोल कैम्बल वाज अ हेवी मशीन दैट टुक अ लिटिल टाइम टू वार्म अप. आई थिंक सलीबा के साथ भी यही है. ही इज अ माउंटेन ऑफ अ मैन, डूड. ही इज अ फकिंग बीस्ट, बट ही टेक्स टाइम टू वार्म अप एंड गेट इनटू हिज रिदम. एंड वही है, जब वो फ्रांस के लिए नहीं खेला ना, आई थिंक दैट ब्रेक वाज सो डेट्रीमेंटल टू हिम कि बस यार बैठी नहीं बात. एंड उसके बाद देखते हैं यार क्या होता है. I feel White and Zinchenko should start. Zinni and Xhaka on the left, White and Saka on the right, and we need to stretch that 5-4-1 setup. Spurs like to be narrow, especially Son and Kulusevski. I think बताओ क्या होता है यार, मानव. Whatever I have seen Spurs play when Kulusevski is available, if you attack Spurs from the right wing, जो उनका लेफ्ट बैक जब एंगेज होता है, कुलुसेस्की ना धीरे 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 ड्रिफ्ट करके ही कम्स आगे. एंड एज सून एज स्पर्स विन द बॉल, इफ यू ट्राई टू क्रॉस इट, वो हेड अवे कर देंगे. एंड देन हॉयबर्ग और केन, दे विल प्ले कुलुसेस्की हु विल जस्ट रन. एंड बाय द टाइम यू कैच अप, बाकी स्पर्स आगे आ जाती है. सो आई थिंक कुलुसेस्की will be, if you think they'll be narrow, I think they'll be a compact from the wing they attack, but the opposite winger will run into space and then they'll try to find again. देखो, it sucks and I don't want my team to ever play with it, but Spurs will play compact counter-attacking football at home. It's boring football that I would not want my team to play, but if it gets them result, I don't think they'll give a fuck. If they come out 3-0 victory above us, भाई लीग लीडर से आपने 3 पॉइंट निकाले, स्पर्स के लिए वो कितनी बड़ी बात होगी. ठीक है, सो प्रेशर हम पे होगा यार. Even though they are the home team, pressure will be on us to capitalize and break this Spurs team open. And if we get the first goal like we got it against Liverpool in the first few minutes, then it's game over. Because Spurs का फिर game plan ही खत्म हो गया ना. Once they don't have a game plan to rely on, to where they are holding back and defending and absorbing and counter, be like, ठीक है, तुम बैठे रहो. We'll play around our passes. We'll try to create whatever chances we get. Incoming transfer window, I can assure it all about Madrid. देखते हैं यार. These transfer windows are getting crazier and crazier by the day. I think something needs to change, dude. These prices that are being quoted for all the players, no, are fucking insane, भाई. अभी ये बारसा ने जो मास्टर क्लास लगाई ओबामेयांग के साथ, हमसे फ्री में लिया, चेल्सी को बेचे, अब चेल्सी से फ्री में लेने की बात हो रही है वापस. ठीक है. एंड एंजो के प्राइसेस जितने भी हैं यार, आई थिंक फकिंग एंड्रिक के लिए आप 60 मिलियन दे रहे हो. Doesn't make sense. Arsenal will destroy Spurs, I'm convinced. Saliba and I think game sharpness के लिए error commit कर रहा है. But I think he'll overcome. हाँ यार, वही है ना, जैसे he'll eventually warm up again. First time in years we have favorites in NLD, tears in my eyes. नहीं, I think in the last NLD we were favorites. But yes,
The away team is a favorite, and itni badi favorite for the first time in such a long time, bhai. This is Saliba's back to 2022 form wala game. Now with a couple of games done, he'll be back with that confidence. I think so too, dude. I would have loved to see him play in the cup, but you also have to give minutes to other players. So ठीक है नहीं खेला, but I would have loved to see him in the cup. Takshbhai, would you take a draw against Spurs considering a record at White Hart Lane? Uh, I mean, it's not the worst result, Zulu, but I think, see, this is what I said before the Liverpool game, okay? We are in good form. Liverpool are struggling. I know our record against Liverpool has not been great. They've beaten us 3-0, 4-0 constantly. But this is the best time to play them when they're down on confidence and down on quality. And if you're not confident of beating them now, then when? Same with Spurs. We're top of the league. We're 5 points clear of City. We've played good football, even against Newcastle. If we did not get the result, we've played great football. Unfortunately, it never came up to a goal or something. But I just think कि यार अभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उनको हराने के लिए तो कब होंगे? एंड आई थिंक वी शुड गो इन विद द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन बीट देम एंड वी शुड ट्राई एंड बीट देम. Draw won't be the worst result, but I'd prefer a win. Being honest, I feel City might end up winning no silverware. I know I'm being too dramatic, but this can happen. FA Cup, they will face Arsenal. No, we'll lose the FA Cup game. If you saw our game against Oxford, in PL, they're playing bad. In UCL, it's hard to. See, I'd say this. They'll win something for sure. I don't know if they'll win UCL or FA Cup or PL or whatever. They just have too much quality, man. And all Pep has to do, literally, जो हर season वो करता है, when things are not going his way, just tell his players, we're going back to basics. Simple as that. Simple as that. And he has so many players to change his play style. उसको counter attacking खेलना, उसके पास counter attacking के लिए players हैं. उसको possession and control खेलना, उसके पास वो भी players हैं. उसको लेफ्ट विंग डोमिनेट करना है तो उसके पास ग्रीलिश है. उसको राइट विंग डोमिनेट करना है तो उसके पास मारेज है. उसको सेंटर डोमिनेट करना है तो केडीबी तो है ही है. ठीक है. तो यार वही मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम. एंड आई थिंक विल ही विन सिल्वरवेयर. देखो, सिटी आर वल्नरेबल, नो डाउट अबाउट इट, बट I just think that they have the capability and the squad to win something every season. Have to win. If City win and we lose, yes, 2 points. That was what I was getting to. Pressure बहुत बढ़ जाएगा यार, and especially considering that fact that we play United उसके बाद. And सब कह रहे हैं ठीक है, United will play this team in the midweek and they'll be tired. नहीं भाई, अगर वो उस टीम के अगेंस्ट भी जीत गई, इतना बढ़िया मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा उनके पास. I won't fancy playing an inform United. So I'd rather play them if they lose City. अगर सिटी से हार गई एंड क्रिस्टल पैलेस के या जिसके अगेंस्ट खेल रहे हैं उससे ड्रॉ हो गया, देन इट्स अ गुड टाइम टू प्ले देम एज वेल. बट जो भी है देखते हैं. या मगेलाश डजंट गिव अ पेनल्टी. आई होप नोबडी गिव्स अ पेनल्टी. गैब्रियल मगेलाश नहीं, जिनचेंको नहीं दे, बेन वाइट नहीं दे, पार्टे जाका नहीं दे, सलीबा नहीं दे, रैम्सडेल नहीं दे. बहुत सारे लोगों से पेनल्टी मिल सकती है यार. हमारा कोई इतना भी वाटर टाइट डिफेंस नहीं. थैंक्स शादाब मैन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से. कौन सा गवर्नमेंट मिस कर दिया भाई? एमजेड, इफ आई मिस्ड इट. नहीं नहीं कर दिया भाई, मैंने कर दिया. Okay. Last time he broke the bank 160 on Eden. I think Madrid will break against on Bellingham. Let's see, dude. I think City will be a rival for Bellingham. अरे दक्ष भाई चिंता मत करो, आर्सेनल पेल देगी स्पर्स को, न्यूकासल का रिवेंज देगी. आई थिंक हम कर सकते हैं यार. We need to win against Spurs. Simple as. We need to build at least an 8 point gap against City, and then whoever wins between United and City, it's a win-win for us. As a City fan, I don't give a hoot about the title this season. If we win UCL, this has to be our season since we have the ability to score a killer goal with Haaland. That is true. That is true. But I don't think Pep shares your thing. Pep will want to win the Premier League. 3-peat हो जाएगा भाई. और कौन सी टीम? I think United के अलावा और कोई टीम बोस्ट नहीं कर सकती 3-peat का. Anyone stop Marcus Rashford, please. You know who's Marcus Rashford's biggest enemy? His knees. Banda is playing out of his skin and he's playing really well. मुझे बस डर ये है, इतनी इंटेंसिटी से इतनी कंसेक्यूटिवली मार्कस रैशफोर्ड ने कभी नहीं खेला. एंड अगर वो गॉड फॉरबिड इंजर हो गया, आई थिंक काफ़ी बड़ा झटका लगेगा यूनाइटेड को. मुझे क्यों लग रहा है कि यूनाइटेड हरा देगी इस बार सिटी को.
हरा देगी तो अच्छा है यार, हमें स्पर्स से जीतना, दैट इज़ ऑल आई केयर फॉर। उसके बाद कौन किस को रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप लोग 4 ऑल ड्रॉ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दैट विल बी गुड। Um, hello, Shantanu. Nice to see you again, man. How are you? How is your deadlift coming along? I hope better हो रहा है. Bro, you are awesome. Saw you a lot and thank you so much, bhai Pratyush. Nice to see you here, man. And thanks, of course, to Mohak bhai. Daksh bhaiya, you mark my word. Arsenal will beat him City to go. Let's see, dude. आप अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, आई होप आई शेयर योर कॉन्फिडेंस, बट नहीं होता। दक्ष भाई, इंडिया में कहाँ से हो? मैं गुड़गांव। आई वाज बोर्न इन दिल्ली, आई वाज ब्रॉट अप इन गुड़गांव। The United will have an edge on Derby Day. Your opinions? They definitely have the momentum, yeah. They have been winning their games and they've been winning very comfortably. Casemiro has changed a lot. Lisandro and Varane, of course, are a great force. Luke Shaw has been surprisingly very dependable. Rashford is in great form. Bruno can pull out quality. Ericsson also is good. I think United have a great squad. It was just about making them play together and making them play really well. But they only have the edge in terms of momentum, in terms of quality, in terms of squad depth, in terms of the ability to kill off games. I don't think anything comes close to Manchester City. भाई, आई नो आप लोग कहोगे कि यार उस गेम में ये प्लेयर नहीं था हमारे पास, वो प्लेयर नहीं था, ये प्लेयर नहीं खेला। सिटी last season beat us 5-0. This season they beat you 6-3. And when they beat us, जितना भी उन्होंने हमें हराया था 3-0 फाइनल, बोर्ड मेरे को याद भी नहीं, एक पॉइंट के बाद दे गेव अप, मतलब दे डिड नॉट प्ले टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। सेम अगेंस्ट यूनाइटेड, वो 3 गोल यूनाइटेड ने इसलिए मारे थे बिकॉज सिटी स्टॉप्ड। अगर सिटी को स्टॉप नहीं करना होता, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मान लो सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो एंड ये लास्ट गेम ऑफ द सीजन है एंड आर्सेनल एंड सिटी विल ड्रॉ ऑन पॉइंट्स इफ सिटी विन एंड आर्सेनल विन, बट सिटी हैव टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स टू मेक अप दैट गोल डिफरेंस। वो उस गेम में 9 गोल मार सकते थे। इश्यूज थे यूनाइटेड के, मैं समझ सकता हूँ, काफी प्लेयर्स नहीं थे, बट सिटी जैसी जो बराज ऑफ गोल्स मार सकती है ना, कोई टीम नहीं मार सकती यार। आई होप यू राइट शांतनु। आई जस्ट थिंक, देखो यार, हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती ना। हिस्ट्री पॉइंट्स टू द फैक्ट कि अब 10 साल होने वाले हैं उस बात को। नो अवे टीम हैज वन द नॉर्थ लंडन डर्बी इन द लीग सिंस 2014 भाई, एंड दैट्स नॉट अ stupid reason. देखो, home advantage counts a lot. So Arsenal is so annoying in the transfer market, man. They're so annoying because they're so slow. But I think this is the right way to go about it, man. I know we all want the shiny new player and we all want a player who can strengthen our team. But then if you do that, you end up playing fucking 20 million or 16 million for Joao Felix, a 6 month loan, 6 month, 5 month loan. You end up paying 90 for Anthony, 45 for Lisandro, 60 for Casemiro, 62 million for Kukuraya. You don't want that stuff, man. You want to do what Liverpool do, which is fine. They don't buy often, but when they buy it quick. SPL 3 paid 2 times royalty and gift of SAF. Yes, Sui. Ten Hag's influence. I think the day Steve, the day Ten Hag came on and he decided that I'm going to go for the strongest and the most influential player in this squad, and I'm going to tell him nobody can give me shit, and if you give me shit, you're reprimanded. That was the day the locker room realized that we need to respect this manager. If you remember, Ragnick, Ole, you'd have all these dressing room leaks about all these players, whatever, everything what was happening in United was told to the media. There was a lot of toxicity in the club, there was a lot of toxicity in the squad, and there was no authoritative figure since Alex Ferguson has come in and taken charge like Ten Hag has. And that's what I think is the difference maker. You have a manager that the players respect, and if not respect, then they fear him. And I think that is the biggest thing that Ten Hag has done. He's brought everyone on the line. He's made everyone realize that they are not bigger than Manchester United. Simple as that. The club is bigger than everyone, including Ten Hag, and that's what he's instilled, which is exactly what Arteta did. Guendouzi was a great prospect to us. Told him fuck off. Right? We took a hit. If we held on to him for longer and we kept playing him, we might have sold him for 30, 40 odd million. We sold him for 15. Now he's coming to Villa for 30 million.
We're getting some percentage of that, but whatever. The point is, if you have to establish some ground rules that this is how the club will function from here on out, and you do it, especially by making an example of the biggest dog in that locker room, then everyone has to respect you. Simple as that. मैच तो 15 को है ना? हाँ हाँ भाई, 15 को है. Gurgaon boys are top G. You know what I mean, Daksh bhaiya. Daksh bhaiya, did you watch the game of Madrid? No, bhai, I did not. I was reading. By the way, guys, I finished my second book of the year. मैंने community post डाला है. I read The Company of Women by Khushwant Singh. It's a hilarious book. It is semi-erotic or semi-pornographic because it's basically about a man talking about the women he's been with. But it's hilariously written. And it's a good story in there. But I'm just warning you, if it is semi-erotic, but it's not ki like pornographic. Okay, some of it is pornographic. It's a great book, great story. What a legend, Khushwant Singh. So if you haven't read it, if you want to read it, go give it a try. Stop hyping United. We're not close to the level of City. Yeah, that's what I'm saying. You have the edge in momentum, but you don't have the edge anywhere else when it comes to City. And I won't hype United, but I think United are a really, really good team. Which Arsenal made you cry and which Arsenal made you happy the most? The Arsenal that made me cry was Socrates, Mustafi at center defense, right back on Bellerin, left back KT, Xhaka at center defensive mid. Uh, ये मेरे को तो Socrates and Mustafi पे मेरे को रोना आ गया भाई. Which made me happy the most? The one with Santi Fabregas. Uh, नहीं, Santi Fabregas साथ खेलते. The one with Fabregas Nasri, no, that made me the happiest. भाई उसमें Bakary Sania था, नाचो था, पैर कोशेल्नी, कीपर हमारा हमेशा सस्पेक्ट था. Of course, Invincibles always made me happy. All of this stuff. प्रतीक सोनी ने क्या बोला है? Was he saying कि this will be about Madrid वाला 55 million for Keita? अरे भाई 55 for Keita. Arsenal to win the first Champions League in the near future. I think we'll win it no, we won't win it. There's a long time. Yes, man. Okay, Edwards was the spine. I think, I don't think, yeah, dekho, these clubs are very smart and they're very big businesses. There can be one person who is very crucial to it, but he's not, the operational does not become impossible without him. So, Michael Edwards, yes, he was good, but I think there are other people who can eventually come up and learn and finally make it. देखो, माइकल एडवर्ड्स का नाम बना क्यों? बिकॉज ही वाज बाइंग लो सेलिंग हाई वट है. मतलब रायन ब्रूस्टर को आपने 20 मिलियन में बेचा, डोमिनिक सोलांकी को आपने 15 मिलियन में बेचा है. दीज आर गुड ट्रेड्स, दीज आर गुड डील्स. बट उसने भी कहीं से स्टार्ट करा था ना. आई एम श्योर और भी लोग होंगे. प्रभात, हाय दक्ष भाई, व्हेन आर यू फ्लाइंग टू लंदन? आई एम फ्लाइंग टू लंदन tomorrow evening. I'll be out. Wasn't Arsenal in the Carabao? So we were in the Carabao Cup. We played Brighton. That game was not telecast anywhere in the world. Arsenal fans watched that game on a person's Twitter live. That's lit, and that person was in the stadium. So yeah, dude, that game was not televised, and we lost 3-0 to Brighton. Guendouzi with the correct attitude could have been a special player for us, man. French international already. He would have been huge, dude. Chad, his reaction after losing any match, or if any players any sort mistakes, just yeah, dude. If you've seen All or Nothing, you see how upset he gets, dude. When I lose a duel, I am upset. Where are you reading this book? Suggest some good cheap ebook website. I'll post it in the comments, okay? मैंने डाल दिया है अभी. Latest comment from me. That's the site I usually go to. Try and go into the fictional and non-fictional sections and type the name of the book. That's the place you'll find, but don't spread it. It's now the only last free site where you can get books. Almunia, the man, the myth, the legend. Only the myth, bhai. Let's not overhype him. He's only the myth. Not a person who loves to read books, but if you can recommend some book which will develop my interest in reading. Yeah, I'll tell you this, man. There is no book to develop your interest in reading. You have interests. If you have interest in football, read a book about football. If you like Arsene Wenger, you read a book about Arsene Wenger's biography. You read Alex Ferguson's autobiography. If you like football and tactics in general, you read about this book called The Mixer. It's a great book. If you like reading love stories, then read love stories. If you like reading philosophy, you like philosophy, do that. If you like bodybuilding, read a book about fitness.
um, देखो, इफ यू लाइक टीवी शोज, किसी टीवी शो वाली बुक पढ़ लो, एंड आपको अगर रीडिंग की आदत नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो. ऑडियो बुक्स आर पर्सनली फॉर मी वर्कड आउट रियली वेल. आई रियली लाइक द नरेशंस ऑन सम ऑफ देम. तो आप ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दीजिए. बहुत ऑप्शन है, ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती टू गेट योर इंटरेस्ट इन रीडिंग. सिर्फ इंटरेस्ट पे है. अब मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक ये बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल वाली बुक्स. मैंने एक दो ट्राई करी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने छोड़ दी. I like light-hearted, well-written books. I like books with a with a narrative. Um, so, for example, I love mythology. I read this book on Norse mythology by Neil Gaiman. It was amazing. Short stories थी, कुछ story और नहीं थी. Short stories थी. It was good. Read it, finished. अच्छी हो गया. But आप मुझे same shoe dog दे दो. शू डॉग है ना नाइकी वाले ओनर का, या जो भी था बुक का नाम, मेरे से नहीं पढ़ी गई वो. आई रेड इट, सीम्ड इंटरेस्टिंग, आई ड्रॉप्ड इट, फिनिश्ड. आई मे बी आई ट्राई इट अगेन, बट कुछ बुक्स मेरे से नहीं बनती है, कुछ बुक्स मेरे से बहुत इजीली पढ़ी जाती है. A squad size is thinner than what is required. Definitely, bhai. Definitely. Also, what signings should we do? Mudrik for first of all, and then a centre mid if possible. Declan Rice would be ideal. But paying the right amount and not sort 100 million for sure. For Bellingham, देखते हैं man. Bellingham देखते हैं क्या होता है. It depends on a lot of factors. It depends on who wins the Champions League, who wins whatever respective leagues they have. And उसको जाना कहाँ पे है? देखो, प्लेयर्स की मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मे बी ही वांट्स टू जस्ट कम बैक टू इंग्लैंड, एंड इफ यू वांट्स टू कम बैक टू इंग्लैंड, देन मैड्रिड का उसमें कुछ है नहीं. देन he'll play for Liverpool or City, and then he'll go to Madrid when he's 26, 27, 28. I don't know. 6-7 was ours. We did double and United lost to Lord. Arey, Eben, man. Well, it was your first season that you followed. It was heartbreaking start to being a Gooner. I'm glad you got used to that feeling, man. One United player that you wanted in Arsenal, Lisandro Martinez. Am I going to the derby? No, I am not. I can't find tickets. Tickets are impossible to get. I might go to a pub or might just stay home and watch the game with my girlfriend. Bye. Do you think the squad size is thinner? Yes. Personally, I feel instead of spending 100 million, we should strengthen our midfield as Xhaka part. But the thing is, Zulu, if Saka goes down, who plays instead of Saka, right? If you saw the Oxford game also, um, Saka kept getting hit, and in the end, he limped off. Now he's fine. That's good. But kya kare na, right? If Saka actually goes down, Saka actually gets injured, then you need somebody. Now, if you say play Martinelli on the right, who will you play on the left? Okay, Smith Rowe, but Smith Rowe's just come back from injury. You need somebody like Mudrik, I think. Crucial 4 games ahead. Will 8-9 points be sufficient to get back on the podium? Are you talking about Arsenal, Anubhav? If you're talking about Arsenal, then yes, it's very crucial. Win against United, win against Spurs. And I think it'll be enough. You can lose your 2 games to City and you'll still be through. लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, न्यूकासल के अगेंस्ट खेलना है, बट आई थिंक सिटी विल आल्सो ड्रॉप पॉइंट्स इन द मिडल. ये हो गया गाइस, प्लीज डोंट स्पैम यार. For sharing those books, it's good to have a reading habit. Good or not, that's up to you, but I just think it's very useful, and I think it's something you should not you know leave, because I think reading life में हर टाइम आपको काम आएगी भाई. So yeah, शू डॉग अच्छी थी, आई एम श्योर अच्छी है, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप, बट मुझसे पढ़ी नहीं गई बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग आई एम यूज्ड टू. It's not the style I like. You think last few years Arsenal fan base worldwide hasn't grown much with younger generation? You think getting UCL? Yeah, that's a great point. Um, success gets fans. It's simple as that. Abhi Arsenal are only getting fans based on the success we had in the past. ये आप players के साथ भी देख सकते हो. अभी जो यंग प्लेयर्स हैं, सलीबा, कामाविंगा, ये सब ऑनरी के फैंस थे, राइट? अब आप सोचो, somebody born in 2006, 2007, अभी कितने 16-17 साल के हैं, राइट? उन्होंने कौन से सक्सेसफुल आर्सेनल प्लेयर को देखा है? whoever they idealize has only played in our past to 2001, 2, 3 में. अभी रिसेंटली हमारे पास कोई इतना सक्सेसफुल ना, हमारे पास कोई हाई क्वालिटी प्लेयर था. चलो कुछ लोग ओजिल को कर सकते हैं, बट रिसेंटली वही है ना, we've not had success, so why will our fan base grow? You see all these Endricks and everyone, they idolize Neymar because Neymar's been successful. He's successful at Barcelona, he's Brazilian, and he's successful at PSG. So I just think bhai that success begets bigger fan base,
दैट इज व्हाई यू सी सिटी का फैन बेस इतना ग्रो कर रहा है, बिकॉज दे कीप विनिंग. एंड हु डजंट लाइक टू सपोर्ट अ विनर भाई. दैट इज व्हाट व्हेन समबडी आस्क्स मी कि यार अगर आप आर्सेनल फैन नहीं होते तो किसके होते? आई विल बी अ मैड्रिड फैन. Because Madrid wins. Doesn't mean Barca doesn't win, but Madrid wins. इतने चैंपियंस लीग जीत लिए, हमेशा पैसे स्पेंड करते हैं, बेस्ट प्लेयर्स वांट टू गो देयर, ऑफ कोर्स यू वांट टू बी देयर. सेम विद बार्सिलोना. सम पीपल, इफ आई हैड सेड कि यार मेरे को अगर आर्सेनल फैन नहीं होता तो मैं बार्सा फैन होता. सिंपली बिकॉज भाई जो बार्सा की जो प्लेइंग फिलोसफी इज द क्लोजेस्ट टू आर्सेनल, राइट? The way they play, at least they used to play under Pep, बहुत क्लोज था आर्सन वेंगर की फिलोसफी से. कंट्रोल करो, टिकी टाका, पास, स्कोर, ब्यूटीफुल गोल्स, ब्यूटीफुल गेम्स, एंड जो कम्युनिटी फीलिंग है क्लब की, राइट? More than a club and all of that stuff. So you can connect to Barca as well. That's what I could also done. But मेरा connection Madrid के साथ है, because मैंने बताया था जैसे मैं आर्सेनल फैन बना था FIFA 2000 डेमो में, there were two teams, आर्सेनल and Madrid. मैंने उन दोनों टीम से बहुत खेला, बट मेरी लाइकिंग आर्सेनल की तरफ थी. सिंपल एज दैट. एंड अगर उस डेमो में मे बी बारसा होती मैड्रिड की जगह तो मैं बेबी बारसा फैन होता, हु नोज. बट या ब्रो, आप ऑडियो बुक कहाँ पढ़ते हो? देखो, आप ऑडिबल ले सकते हो, बट स्टोरी टेल करके एक ऐप है, STORYTEL, उस पे आपको मिलेंगी. ये फ्री में नहीं होंगी ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दैट इज गुड. देयर इज ऑल्सो, व्हाट वाज दैट साइट कॉल्ड? स्क्रिप्ड, SCRIBD. मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में. स्क्रिप्ट पे भी कुछ ऑडियो बुक्स हैं. आप उनको भी देख सकते हो. अगेन मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी. Lisandro Martinez fan chant made by fans. If you haven't, I'll listen to it. ऑडियो बुक सुनी जाती है, हाउ डू अरे यार उसका तुम मतलब तो समझ गए भाई. एमजेड इतने पेडांटिक मत हो यार. वैन पर्सी मेड मी एन आर्सेनल फैन. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. आई विश वी कैन विन अ रिस्पेक्टिव डर्बीज. यस, दैट विल बी ग्रेट फॉर आर्सेनल एंड यूनाइटेड भाई. कजोला भी तो सही था. कजोला बहुत बढ़िया था यार. मैं वही कह रहा हूँ. देखो, वी हैड दीस कल्ट प्लेयर्स हु बीन cult status जिसको कहते हैं ना, it is just below a legend, but it is a player that is well liked by everyone. So I just think हमारे पास काफी सारे cult players आए हैं, but there have not been any legends that you can associate with this club in the last 10-15 years. Simple as that. Most Arsenal fans are 25 plus. Now the paradigm will shift and we'll get in that 14 plus if we get UCL and more trophies. So, yeah, exactly. If we start winning trophies, if we start playing beautiful football, यू विल हैव न्यू पीपल, राइट? एंड अब चलो, पहले आई थिंक यार इतना होता था, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, बट fans of one club used to hate the fans of other club. Now in this chat I can tell you, I would say 60% of you are United fans, 40% of you are Arsenal fans, and बीच में of course थोड़ी percentage कर लो तो Madrid fans, Barca fans, एक Spurs fan था Amogh, right? So it's strange, right? I am a channel dedicated mostly to Arsenal, but I have United fans who are also coming here and listening to me because I think अब थोड़ा ज़्यादा spread हो गया है. But that doesn't mean कि भाई जब आर्सेनल हारे, अगर आर्सेनल हार गए यूनाइटेड से तो ये सारे यूनाइटेड फैंस वाले आएंगे, और दक्ष भाई. एंड सेम थिंग फॉर मी. अगर आर्सेनल जीत गई यूनाइटेड से, ये सारे जो यूनाइटेड फैंस मेरे चैट में हैं, सबको मैं एक एक पकड़ के बोलूंगा, और एमजी क्या हाल चाल, और लकी रेड्स क्या हाल चाल है. तो बस ऐसे तो होगा. वुड यू टेक ऑयल? नहीं यार, आई वोंट. देखो यार, हु वुडंट वांट ओनर्स दैट कैन स्पेंड क्रेजी मनी? बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं गाइस, एक ना सॉर्ट ऑफ डिस्टेंसिंग होने लगती है क्लब से. जो आर्सेनल अभी है ना, द वे वी आर डूइंग थिंग, इट जस्ट फील्स राइट. टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, इट जस्ट फील्स राइट. हम लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम ने जो नया आर्टवर्क बनाया उसमें इतनी सारी कंसल्टेशंस लिया, और ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल ओनर्स आ जाएं तो ये चीज़ें नहीं करेंगे, बट उनका मोटिव क्या है? ये अभी जो आर्सेनल है, इसका मोटिव ये है कि ये कम्युनिटी से कनेक्ट होना चाहती है. अगर ऑयल ओनर्स आ जाएंगे, आई थिंक उनका मोटिव होगा कि आप दिखाओ आप कम्युनिटी से कनेक्ट कर रहे हो, बट आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपकी इमेज वाइट वॉश करनी है.
अब आप न्यू कासल को देखो, न्यू कासल की जो नए नए ओनर्स हैं, they've been very good, they're doing community work. But how can you separate what their owners are actually doing, right? You can say, देखो, Newcastle के owners are connected to the Saudi family, right? And you know what Saudi Arabia is doing in Yemen. Do you really want to? मुझसे नहीं होता, honestly बताऊं. If I was a Newcastle fan, and I'm not saying कि आपको भी outrage होना चाहिए, and आपको भी गुस्सा होना चाहिए. I just think you fall in love with the club for one reason, and if you get these oil owners, I just don't think you'll sustain that love. You love winning. Everyone loves winning. You see City, you see PSG. Everyone loves winning. But at what cost, man? What is the emotion left? I won't be able to do it. I'll always think, अच्छा इन्होंने ये किया है, they've done something good for Arsenal. It is because they want to hide something they're doing. मेरे दिमाग में तो ये चलता है. Maybe I'm wrong. Maybe that's not the right way to look at it. And maybe I'm being a little too judgmental. Who knows? I am a flawed human after all. But मुझे बस लगता है यार कि अगर मैं न्यूकासल फैन होता, एंड जैसे हमारे देखो हमारे चैट में जोशुआ है ना, जोशुआ इज अ ग्रेट न्यूकासल फैन, ही इज बीन अ फैन फॉर इयर्स. But if I was a new fan and I was seeing my owners do this, my owners do that, pumping in money, buying players, I'll be happy, we're winning, we're great, we're in the semi-finals of a trophy, of a tournament. And then one day I hear the news कि भाई सऊदी अरेबिया ने और इतने यमनी को बॉम्ब कर दिया. I'll be like, fuck man, how do you ignore this? Then you have to literally kill your conscience to ignore this, right? So yeah. What do you think? Having accolades in clubs make you legend, contributing at most, but didn't have makes you legend. Yeah, depends, right? It also depends on the history of the club you are. Now, in a club like Real Madrid, unless you have people like Bale, who some people really like, some people don't really like, despite him giving them a few of the greatest moments, winning trophies as well. There are some players who haven't won much, but they're still well liked. But वही होता है, some players will be legends at club just for contributing, and some players will be legends at club for winning, especially for winning. Kane is a legend at Spurs because he's contributed all his life. But एलन शेरर भी जीता था आई थिंक. न्यू कासल के साथ मेरे को याद नहीं क्या जीता था, एलन शेरर नहीं जीता था, जो भी है. But some players are only legends because of winning. So it depends. I started supporting Arsenal in the 13-14 after we signed Ozil and won 3 FA Cups in 4 years. That was amazing time, right? That was an amazing time. How much football do you consume in general? How do you manage to work late at night, 1:30 a match? That's what, my friend. I don't consume too much football. I only watch. I'll tell you what. When I am reading माई कोर्स वर्क ना, एंड अगर गेम चल रहा है तो मैं गेम को साइड पे लगा देता हूँ. अब तो चल मेरे को यूट्यूब करना पड़ता है तो वॉच अलॉन्ग हो जाता है. बट आई डोंट कंज्यूम, आई डोंट वॉच मैड्रिड, आई डोंट वॉच ऑल द मैचेस. आज फुलहम एंड चेल्सी का गेम है, आई वोंट वॉच दैट. मेरे को घर के काम करने, आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री, आई हैव टू डू सम स्टडिंग एंड एवरीथिंग. आई वोंट वॉच इट. बट अगर मन करेगा तो साइड पे लगा लूंगा, मे बी व्हाइल आई एम डूइंग सम राइटिंग वर्क और डूइंग सम कोर्स वर्क, आई पुट दैट गेम ऑन द साइड. So I don't consume football. I would say at max I consume maybe 2 hours of football. Oh, sorry, 2 games a week at max, because I don't have the time. Bhai. That's what you're saying. I can't manage. I am trying to sleep on time. I'm trying to get 8 hours of sleep. I'm trying to get fit. I'm trying to work out. I think that's what. And some things you have to give. So I've given up video games for a while. I haven't played a video game in a while. I've given up drinking. I haven't had a sip of alcohol since the New Year's Day. So ऐसी चीजें तो, some things you have to prioritize over others. But for me, it's only you, so I feel connected. Thank you so much, Ramzan. That's really good that you can see beyond fan rivalries and see this. Oil owners are doing PS. Yeah, I know. That's what I'm saying, right? Oil owners अच्छे हैं भाई. For your oil, humbly disagree with oil owner statement. City Football Group has invested in Manchester, built academies and systems for the youth there. Hedge fund owners तो oil owners से भी ज़्यादा dangerous. देखो, let's be honest, there are no ethical billionaires. Let's not pretend that Stan Kroenke is a great guy and he's just because he's this, is that. Um, Fine, your points have taken in that fact that he has invested into the community, right? And I'm not saying that everyone who's an oil owner is a terrible person. I was just saying that the connect I have and the things that the club is doing right now, I do not think I will have those feelings if there was an oil owner
who had artificially inflated the status of my club. Is Manchester City a great club? It's well on its way to be a great club, one of the best Premier League clubs ever. You can say that they have fielded some of the best teams in Premier League history. But I think there has been some amount of artificial inflation. And I think it's not a case of sour grapes, it's the truth. Now you have amazing players that you can sell also for a great price. You have amazing players that you buy for a great price. But I always say this about City: you had the money to squander and spend and waste before you finally got it right. How much did you buy Sergio Gomez for? Do you think any other club can do that? I don't think so. Not many, at least. Nolitos, Jesus Navas, Steven Jovetic, Wilfred Bony, Alvaro Negredo. These are all the players that City had tried. Ilakwe Mangala. All the players that City had and tried. Did not work out, shipped them out. And I don't think that is the sort of journey that most clubs can afford. It's simply unaffordable. तो बस वही है यार. You can speak us if Arsenal fans win against, but if United against Arsenal, I won't be coming here to share the hate again. Instead, would sit here and express my emotions. देखते हैं भाई, देखते हैं. अभी तो एक हफ्ता पड़ा हुआ है अभी तो. To be honest, as a Madrid fan, I feel more connected to you than all the Madrid YouTube channel. Thank you so much, Shantanu, man. I just try to be as nice as possible. या ऑडियो बुक कहाँ पढ़ते स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, स्क्रिप्ट पे देख लो आप. ठीक है, आपको वहाँ पे ई बुक्स, ऑडियो बुक्स सब मिलेगा. Do you think on later half Arsenal will shift their focus to Europa games? Yes, we will. I think Arteta की mentality यही है. देखो, if you have a young team, you cannot tell them it's okay to prioritize one competition over the other. He will always say that we will focus on every competition and we'll give it our all, because that is the Arsenal way, guys. We have to focus and we have to win. Arsenal are a winning club. We might not have won much in the past few years, and we might have fallen off the competition, but historically we are a winning club. And if connecting to the roots of the club is the entire process, by that is what we have to do, then we have to compete in FA Cup, even if it's against City, to compete in Europa. No matter how many games we have to play in a week, we have to compete in the Premier League. We have to do everything, because this is what Arsenal is. Yes, they won. He won it at Blackburn, nothing with Newcastle. Yes, Arsenal was always based on the local community, right? If you see the origins of Arsenal, it was called क्या था, Clock and something. That was the name of Arsenal. Original Arsenal का नाम Clock and something था. It was literally formed by a group of army men, right? The Woolwich Armory. Arsenal was always based in the community. The locals found Arsenal highly relatable with that history and heritage, because it was a team built by the blue collar workers. Chelsea won a lot, but still hasn't got deep into that cult. देखो, Chelsea का भी history is very interesting if you read about it. But of course, I'm biased towards Arsenal, so I think Arsenal's history is amazing. Who? Chelsea, bhai. Chelsea. I'm sleeping at 4 a.m., getting up at 7 a.m. for college sleep schedule slot. Yeah, man. I would say stop that as soon as possible. Sleep आपको करना ही है. Sleep is very, very important, bhai. Sleep is very, very important. Try and get 8 hours is ideal, but at least get 6, man. आप 12, अगर आपको 12 बजे सोना है ना, आप 11 बजे सारी डिवाइसेस बंद कर दो, आप ऐसे करके सो जाओगे. द सेकंड आपके आर्म डिस्टेंस पे फोन, आईपैड, कंप्यूटर पड़ेगा ना, आप नहीं सो पाओगे. एंड दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ नेगेटिवली. अभी तो आप यंग हो यार, आपके लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बट फिक्स योर स्लीप भाई. Bro, but Qatar and UAE have not fought a war in the past 8 years. I'm defending City as a fan, but humanity above all. नहीं, I know. I'm not saying Qatar and UAE. मैंने कहा कोई कंट्री एथिकल नहीं है. अगर आप प्रॉपरली डिग करोगे, आपको इंडिया में भी एथिकल इश्यूज मिलेंगे जो हम गलत करते हैं. ठीक है, तो ऐसे तो मैं किसी भी कंट्री का निकाल सकता हूँ, बोलता हूँ नहीं देखो कतार ने ये किया, देखो यूएई ने ये किया. आई जस्ट थिंक जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन एज अ स्टेटस होता है, दैट टेक्स the club away from the community. It brings in a winning mentality and a winning culture and a lot many more fans. But I just feel that there is always a motive to do the good things in community. चाहे वो स्टैन क्रॉन्ग के हो यार, बट मुझे ओके ये इस पे हम एक बार वापस बात करेंगे कभी और, जब मेरे थॉट्स कलेक्ट हो जाएंगे. आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड मैं ये नहीं कह रहा आपको शर्म आनी चाहिए आप सिटी फैन हो, या आपको शर्म आनी चाहिए आप पीएसजी फैन हो. यार यू आर अ फैन फॉर अ रीजन. लाइक आई सेड, winning gets fans, and you don't have to be like
सिटी ने कुछ गलत नहीं किया, यूएई ने कुछ गलत नहीं किया, कतार ने कुछ गलत नहीं किया. I just find artificial inflation of status and winning. I don't find it okay. That's just me. The reason I don't mind United spending a billion every year is I feel over the years they've built up that revenue so much. And maybe this is City's way of building up that revenue to a billion to get to an eventual self sustaining model. And I just think in the past they've spent so much money and they've gotten it wrong so many times, but they've never been punished for it. हम लोग मुद्रिक के लिए, मैं तो कह रहा हूँ मुद्रिक के लिए उसका चेयरमैन 100 मिलियन मांग रहा है और इवेंचुअली प्राइस 92 मिलियन आ जाती है. हम 8 मिलियन के लिए भी हैगल करेंगे बिकॉज हमें पता है वो 8 मिलियन बचाने के लिए आर्सेनल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड ओके, द रीजन, ओके, इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सिटी, यू रीड सिटी के ऊपर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं. आई एम नॉट सेइंग आप ऑयल मनी की वजह से आपने वॉर लड़ी एंड दैट्स व्हाई यू शुड नॉट सपोर्ट सिटी. द रीजन आई डोंट लाइक सिटी, apart from the fact they're title challenges, is they have very corrupt practices. If you find the reports, if you want to read the reports, read it about how they use shell companies that are sponsors. आपके कुछ betting sponsors हैं. They don't have any offices. They don't have any headquarters. If you trace it, ये सिटी ग्रुप ने ही कंपनी सेटअप करी है. सिटी ग्रुप उस फेक कंपनी में पैसे डालते हैं और उस फेक कंपनी के थ्रू अपनी क्लब को स्पॉन्सर करते हैं. That is how you get around FFP. You say we have sponsorship money, but who is that company? It is the company you have started. So yes, they contribute to Manchester, they build facilities, they help the youth, they help the community. I just think these are unethical ways of inflating the amount of money that City has, and PSG is the same. Do you think Walcott is a legend for Arsenal? Yes. In terms of goal scoring, I would say he is a legend. भाई वो बंदा 16 साल की एज पे आया था और इतना साल खेला हमारे साथ. ठीक है, एंड में फॉल ऑफ कर गया, बट ही इज गिवन अस अमेजिंग मोमेंट्स भाई. Theo Walcott at striker भाई, that those days are insane. Yes, हो गया ये. Jesus Navas Negredo at least more than decent Daksh bhai, but majorly agree with your point. This is too much money that has been spent, dude. हाय दक्ष भाई, लेट तो नहीं 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 नहीं, अभी 40 मिनट्स, अभी आधे घंटे और चलेगी स्ट्रीम. मेरे को 2 बजे निकलना है भाई. सीजन खत्म होने के एक बाद एक स्ट्रीम पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बनाए, एक करते हैं यार. अभी कोई इंटरनेशनल ब्रेक आएगा ना, वील कीप अ स्ट्रीम इन द मिडल जिसपे हम दक्ष के प्रवचन रखेंगे, ठीक है? आना हो तो आ जाना. इट्स गोना बी पढ़ाई रिलेटेड. और मेरे को पता है आप लोग काफी लोग यूट्यूब पे आते हो पढ़ाई से बचने के लिए. मेंट चेल्सी, नो डिसरिस्पेक्ट, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स. MEFC will have to qualify and raise significant money through sales if Ten Hag is to sign midfielder and striker this summer. देखते हैं यार, let's see what your new ownership is, what they do. Are Arsenal going to go after Mudryk for 100 million? Then why not Leao? Because Leao, for me, I think there is a profile of player that we want. A player who has speed, directness, and great dribbling. Leao is quick. He is great at dribbling, but I don't think he has the finishing that Mudryk might do. यार देखो, ये talent scouting वगैरह ना हमसे तो better वही करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं. सो हमें जो प्लेयर अच्छा लगता है, मे बी ही हैज सम क्वालिटीज और डेफिशिएंसीज दैट वी डोंट रियली नो. स्कोर प्रेडिक्शन 2-1, बट आई थिंक इट विल एंड अप 2-2 टू आर्सेनल. दक्ष भैया, इज योर जीएफएस पर्सन? नहीं भाई, प्लीज ऐसे ऐसे कर्स मुझ पे मत डालिए. ये हो गया है. रूमर्स तो आ रहे हैं कि यूनाइटेड विल बी सोल्ड टू दुबई. यार पता नहीं यार, ये ओनरशिप चेंजेस भी ना जल्दी जल्दी नहीं होते. ये चेल्सी वाले इसलिए होगा बिकॉज गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी. Sorry, Daksh bhai, I think I'll have to look up to my books too as my exams are. No problem, bhai, MZ. Of course, exams are always important. What are your thoughts on the Manchester derby? I think United have an edge in momentum because City also lost, but I think City has the quality to thrash United. I won't be surprised if it's 4-0 to City, and I won't be surprised if it's 2-0 to United. वॉच द रोनाल्डो फ्री किक वर्सेस. अरे यार प्लीज यार, क्या करते हो शांतनु यार, दर्द भरे ख्याल क्यों दिला रहे हो मुझे. हॉट एंड कोल्ड प्लेयर, एग्जैक्टली, फॉर लियाओ. अमेरिकन डू सुपर करप्शन भाई. अमेरिकन सबसे करप्ट है. बट वही है ना, इफ यू आर बाइंग अ क्लब इन द यूके, हु इज द पब्लिक मोर कंफर्टेबल विद, एन अमेरिकन, पीपल हु लुक जस्ट लाइक देम, और ब्राउन पीपल. तो वही है. अबे क्या बोल रहा है, एसी मिलान में जाके देखो, पोर्चुगल में ही वाज हॉट एंड कोल्ड बिकॉज मैनेजर डजंट यूज हिम राइट. यार देखो, ही इज गुड भाई.
कोई डाउट नहीं है, लियाओ इज अ गुड यंग प्लेयर, बट आई जस्ट थिंक देखो देयर आर पीपल हु आर मोर टैलेंटेड देन यू एंड आई हु कैन सी व्हाट ही ब्रिंग्स एंड व्हाट ही डज नॉट ब्रिंग. वॉलकॉट इज नो लेजेंड बट अ गुड प्लेयर. ठीक है, यू माइट फॉलो ऑन दैट स्पेक्ट्रम. लियाओ इज अ गुड साइनिंग. न्यू डील मस्ट प्रॉब्लम. हाँ यार, ही माइट बी साइनिंग अ न्यू डील एंड आई थिंक लियाओ विल एंड अप एट चेल्सी भाई. सिंपल है जी. जब पुलिसिच को बेच देंगे और एक दो विंगर्स को और बेच देंगे, देन विल गेट लियाओ 100%. ये 90 मिलियन में खरीदेंगे लियाओ को, देखना. है ना, मेरे को भी ये लगता है. मुझे लगता है थोड़ा सा है इस बंदे में, थोड़ा सा ना कुछ हिला हुआ है. खैर, ओके, अब बहुत कमेंट्स ले लिए भाई. तो we're gonna go over the games and I want your predictions um in terms of क्या है. देखो, सबसे पहला गेम है फुलम एंड चेल्सी. फुलम एंड चेल्सी का क्या लगता है आप लोगों को भाई? आई थिंक चेल्सी हैज इट. नो नो नो, बट फुलम में मिट्रोविच नहीं खेल रहा है. आई पर्सनली थिंक चेल्सी कैन विन दिस गेम यार. इट्स Fulham is good, but I think without Mitrovic, they missed that goal threat. And I think Mitrovic would have complicated a lot of issues for Chelsea. And maybe Joao Felix get his first goal, and Chelsea fans get really happy. I think it'll be, guys. Um, I think Fulham will lose. Hello, Vivek. How are you, man? Hey, Cristiano. Nice to see you again. Uh, Mitrovic suspended नहीं है क्या? I thought he was suspended. Yeah. News. Uh-huh. They're always Chelsea, high quality opponents. पता नहीं भाई. No idea. देखते हैं. Next game week. I mean next day, tomorrow at 8 p.m. It is Leeds and Villa. इस पे तो यार लीड्स ने रटर को साइन कर लिया क्या? I think they signed a new player for 40 million ना. But ठीक है, I think Aston Villa can win this यार. Aston Villa, Unai Emery is doing well. Won't be surprised. Don't care about this game too much. This is the big game for me, guys. ये लोग हमसे पहले खेल रहे हैं एंड जब भी सिटी हमसे पहले खेलती है वो हारती है एंड जब वो हारती है तो हम जीतते हैं. आई नो आप लोग काफ़ी लोग यूनाइटेड फैंस हो, बट हु डू यू रियली सी विनिंग? आई एम ऑनेस्टली विदाउट एनी बायस, ट्राई एंड बी नॉट बायस्ड एंड टेल मी हु डू यू थिंक बिटवीन सिटी एंड यूनाइटेड विल विन? आई थिंक सिटी विल विन दिस, मैन. आई थिंक दिल विन इट 1-0. सिटी, राइट? शांतनु says सिटी विल विन. What do you guys think? मुझे लग रहा है, देखो, if United will win, I won't be surprised. I won't be like, अरे ये कैसे हो गया? Um, I just think City have too much quality, man. Man United 1, City 3, says Zulu. United will win, hopefully. Okay, if you are an Arsenal fan, who do you want to win? देखो, ideally दोनों अगर draw कर ले तो best है हमारे लिए. United 2-1 says BX Gunner. Um, 3-1 City. This Haaland fella is too inevitable. City 2 in full gussa on United. Yes. Angry Pep and angry City is the worst team to play, bhai. When Pep knows he's fucked up, no, you don't want to be in his path, bhai. वो 4-5 रन घुसे देता है. सही कह रहा है भाई एबिन. एबिन is right. You don't want to play an angry City, bhai. But as an Arsenal fan, who do you want to win? I want, I'll be honest, guys. I want United to win. I want United to win. देखो, if it's draw, then तो भाई बल्ले बल्ले, full बल्ले बल्ले. Can't see Pep losing 2 in a row. It's very, very unlikely, right? But if it's a draw, if it is a draw, Jesus, wait. नहीं यार, ये क्या हो गया? Wait. If it is a draw, okay, let's do the permutation combination, all right? If City lose and United win, 38 points. 6 points behind us and City stay 5 points behind us. And if we win, then City are 8 points behind us and United are 9 points behind us, which I think is great. This is good. If they both draw, City 4 behind us and United 8 behind us. And if we win, then 7 and 11. I'm a United fan and eagerly want Arsenal to win the title. City को नहीं देख सकता. हाँ यार, same.
I think United win because Rashford is on fire. देखो, Cancelo is not good, man, and City are so vulnerable against counters. आर्सेनल विल विन द प्रीमियर लीग चिल्ला रहे, नहीं शांत रहो, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं होगी इसके बारे में बात। जब हम सिटी को 2 बार खेलेंगे तब होगी उसके बारे में बात। आई वांट यूनाइटेड विन 10। Yeah, man, if they win 10-0, imagine. If they win 10-0, United will still be on 17, भाई क्या बकवास है यार। Shouldn't do the same mistakes we did against United. Yeah. I think Haaland, the fucking sand, will kill everyone, bhai. I think it'll be a 3-0 City, guys. Okay, let's get out of dreamland. I think it'll be 3-0 City. Uh, can Weghorst make the difference? I hope, man. Listen, Buller Saab, if United and City draw, if City win, sucks. But United humbling is always nice to at least witness. Can he make a difference? I don't know. I don't know if he'll be able to make it to the squad also. Dekho, this is not FIFA that you buy a player and you just put him in and he plays the same way as a computer. He has to train, he has to learn what his teammates do, he has to do something. He might come on as Fellaini used to come for you guys, but ab pata nahi. Wolves, West Ham, both teams, man, they're kind of in a drubby suck moment. I think they played against each other very recently, and I think West Ham won. Don't care about this game. Don't care about this game. Brighton, Liverpool. Do you think Liverpool lose another game? Ooh. Daksh bhai, being honest, after United fans have left the stream, I've seen it before. अच्छा ठीक है ठीक है, फिर ना मेरे को यूनाइटेड की गेम्स एंड में करनी चाहिए, कोई बात नहीं। ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल भाई, डू यू थिंक Brighton 3, Liverpool nil, says Renisu. Renisu will always stay here. I know. I trust Renisu to always be here, bhai. Even if the United fans leave. Okay. I think it'll be a 2-2. भाई बस स्पर्स को 1-0 मत करना शुरू में, वो कम बैक कर ले। नहीं नहीं, हमने उनको 1-0 कर लिया भुल्लर साहब, then Spurs are gone. वो they'll score 1 goal inevitably. We'll need to score 2 goals for sure. Whether they score 2 or not, I don't know. Liverpool 4-0. Eben says Brighton 2-0. Deserby magic against second-hand Gegenpress. Yeah, देखो, I don't like to see Liverpool lose. The only reason I love seeing Liverpool lose is फिर ना निधि भाई की streams शुरू होती है, and he's like, और भाई, निधि भाई best है यार. Liverpool 2, sorry, Brighton 2, Liverpool 1, 2-0 Spurs. Very bad, yeah, I show speed. Very bad. Man United can hold City this week. I think so. They can. I think so. That Trossard is injured, so it'd be a little bit tough. True. I think Liverpool win this, guys. Even though away Amex is not an easy stadium, but देखो पता है, ब्राइटन Amex पे ज़्यादा बड़ी टीम से हारी नहीं है ना. I think it could be a draw also. You may have heard Haaland's arrival has made City one-dimensional, and actually City's goal sheet was pretty much everyone used to score, and now you see Haaland scoring only. I think that if you want to have a player who can kill off games by himself, you have to feed him. ऐसा नहीं है कि other players can't score, but the obvious threat is still Haaland, man. And the reason he scores a lot is because he's that good of goal scorer. देखो, अगर आप सिटी में हालैंड की जगह कैलम विल्सन को डाल दो, who is again a very good proper number 9, आप नहीं देखते, but हालैंड है इतना अच्छा that he can score these goals. So ओके, 2-0 स्पर्स. इसको तो यार मेरे को तो आइशो स्पीड को ब्लॉक करने का मन कर रहा है. मजाक कर रहा हूँ. इफ एडी स्कोर्स अगेंस्ट टॉटनहम यूनाइटेड एंड गेटिंग नंबर 14, यस. Daksh bhai, you have heard, if Eddie scores against Spurs, now I can see him do that celebration Henry वाला. ये हो गया है. कैसे हो लिवरपूल के चाहने वालों, आगे फिर से मौत का खेल देखने. फेवरेट इंडियन कंटेंट क्रिएटर भाई सभी हैं यार. आई लव मेनेस एंड द मॉन्क, आई लव मोहक भाई, आई लव YJR, आई लव बाबा ऑफ कोर्स. कुछ आर्सेनल क्रिएटर्स भी मेरे को अच्छे लगते हैं. मयंक डज रियली वेल, दुष्यंत डज रियली वेल, संडे लीग पंडित आर गुड, TCS भी इज ग्रेट. उनकी भी काफी बकचोदी वाली स्ट्रीम्स होती है, मजे ही आते हैं हमेशा यार. I genuinely, मैं मजाक नहीं कर रहा. I'm not even being diplomatic.
आई जेन्युइनली लव एवरीवन। मैं मोहक भाई के साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट किया हूँ, तो ही इज़ माय फेवरेट। बट यार बाबा का कंटेंट इज़ सो गुड, वाईजेआर का कंटेंट इज़ सो गुड, एसएलपी का कंटेंट इज़ सो गुड। आप कौन किसका कंटेंट देख के बोल सकते हो इसका तो सब पर कंटेंट है सिवाय मेरे, राइट? सो आई थिंक एवरीवन इज़ रियली रियली गुड डूड। आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लिवरपूल दो। दे आर द वन team who showed empathy towards us till post 2017 era. Arre, trust me, bhai, Eben, there are some Liverpool fans that fucking hate us, okay? But yeah, City United 1-1. Okay, fine, fine, fine. United will defeat City. Mark my words. Right after that, we'll lose to Arsenal. If that happens, makes me. That'll be the perfect thing for Arsenal, bhai. That'll be the perfect. You took points of City and you lost to us and you gave us points. Don't you think City's become predictable? No, man. I think it's like this. In that Bayern Munich, which Ian Robin also played in, you knew what Ian Robin was going to do. वो left पे लेगा ball, cut in करेगा और shot मारेगा. एक second यार. हाँ, तो कैराबाओ कप प्रिडिक्शन अभी तो देखते हैं, देखते हैं. माय फेवरेट इनिंग, अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. आज बारसा का मैच अगर जीत गई तो एल क्लासिको होगा फाइनल में. अरे कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट फॉर बारसा एंड रियल फैंस एज वेल. ओके, सो वी डन ब्राइटन लिवरपूल, एवर्टन साउथहैम्पटन. अरे चेल्सी आज भी खेल रही है, 12 को और 15 को भी खेल रही है. वाह वाह वाह. ओके, Everton, Southampton. They signed Orsic and another player they're signing. Yeah, Southampton making decent signings by the way. Brentford versus Bournemouth. I think Brentford wins this. Chelsea versus Palace. I think Chelsea wins this. Newcastle wins this. Now this is the big game. Tottenham, Arsenal. हाँ, true. Because पहले हम Spurs के साथ हमेशा top 4 पे खेलते. What happens if Brighton wins 5-0 against Liverpool? Let's see. There is a table that we can see. If Brighton wins 5-0 against, well, if they win against Liverpool, anyways, they go on top. So that's fine. They just need to win to get into sixth. And yeah, they'll be outright sixth then. Okay. Well, this would be nahi. Arsenal 2, Spurs 1. Spurs 3, Arsenal 2, Son hat tricks is Atharv. Atharv, are you a Spurs fan or are you just an Arsenal hater? I'm just kidding. भाई कोई न्यू कासल को रोको, नहीं रुकेगी वो अभी थोड़े टाइम तक. जाओ फिलिक्स का स्टेटमेंट पढ़ा है, माय ड्रीम क्लब. हप हप झूठे झूठे. अरे भाई झूठा. Not a hater, of course not. You're a Spurs fan, of course. Are you a Spurs fan, Athar? It's nice to have you here, man. If you just like Son, अरे amazing. देखो, I'll be honest, guys. जो अथर ने कहा मैं भी वही हूँ. I love Son. I just hate the fact that he plays for Spurs. He is dirty also, but he's also very nice guy. And whenever if you see Son ki off the field stuff, no, whatever जो Spurs का कभी कभी club डाल देता, I love Son. I would love somebody like Son at Arsenal, but he plays for Spurs. I can't really like Son beyond it. He gives glimpses of Chris. True, two-footed left winger terrorizes defenders. Son ki hat trick is a little difficult, Athar, but you have it. If you have Spurs winning 3-2 against Arsenal, that's his prediction. I think, guys, it'll be 2-1 to Arsenal. I think Eddie Nketiah to open the scoring, Kane to equalize, Kane coming close again but not being successful, and then Arsenal winning it through a Smith Rowe or a Martinelli goal. सॉन स्पर्स में ना होता तो बहुत हाइप होती उसकी. आई थिंक उसकी हाइप अभी भी है यार. इट्स जस्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं, बिकॉज उनको पता है डैनियल लीवी उनको चूस लेगा. आई थिंक आर्सेनल शुड गो फॉर काइसेडो इंस्टेड ऑफ राइस. हाँ यार देखो, मेरा प्लान ये था कि इफ मुद्रिक इज बीइंग अनसेंसिबल, जे तो ट्रांसफर है 100 मिलियन तक जा रहा है, तो इससे अच्छा यू गेट 70 मिलियन में काइसेडो ले लो यार. इट्स सो मच इजी. तक्ष भाई, सलीबा इज ऑन लोन टू आर्सेनल. नहीं भाई शांतनु, वी सेंड सलीबा 3 years ago or 2 years ago. Then we loaned him out first to Saint Etienne and then to Marseille. And now he's actually our player. So Shantanu, Saliba is a permanent Arsenal player. We just loaned him out for the last 2 seasons. Arteta and Conte will have a fight. Oh, yeah. Son is second fiddle to Kane. Hate the fact that he's always overshadowed. I think Son and Kane is a
partnership that I haven't seen since Sturridge and Suarez. And Suarez उसमें main man था, but Sturridge भी इतना important था भाई. Yes, does he overshadow Son a little bit? But I think that's got to do more with him being English than anything. But I think Spurs fans love Son, man. They love Son. Asensio to Arsenal, no chance. Son is the most underrated player. He's not underrated, I'd say, but I agree with the fact that he deserves respect. एंड मेरे को ना इतनी सारी स्पर्स की अच्छी बातें बोल के ना मेरे को उल्टी आ रही है गाइस, मैं क्या करूं? किडिंग, I'm kidding. All right. Yeah, that's the game for the weeks, man. उसके बाद वेडनेसडे को और थर्सडे को हैं गेम्स, फिर सैटरडेज को हैं. चलो, दैट इज दिस गेम वीक यार. क्या लगता है? Arsenal 2-1, first goal by us, then penalty to cock and ball, and then one penalty for us. Oh yes, भाई, cock and ball FC. Saliba went on 3 loans. Oh हाँ, he was in Nice also, right? जब वो उसके साथ डांटे के साथ खेला था. You're right. फर्स्ट तो आई थिंक सेंट एटियन वाला जो लोन था वो तो उसी सीजन ही लोन था. भाई सिटी का रीसेंट गेम प्ले देखकर बहुत फट रही है, बट हाँ एक पॉजिटिव भी है कि लास्ट मैच हम हार के आ रहे हैं. यू ओ हाँ, यूर अ सिटी फैन, राइट? आई थिंक एंग्री पेप एंड अ पेप हु इज लॉस्ट इज नेवर अ गुड टीम टू प्ले. वो बहुत गुस्सा हो जाता है. दक्ष भाई, योर फेवरेट मेमोरी ऑफ आर्सेनल? फेवरेट मेमोरी जब हम हल सिटी के अगेंस्ट एफए कप जीते थे. बहुत बढ़िया, मजे आए थे. हम पहले 2-0 हार रहे थे, फिर हमने इक्वलाइज करके फिर हम 3-2 जीत गए. मैन यूनाइटेड वर्सेस सिटी का प्रेडिक्शन, माय प्रेडिक्शन इज सिटी विल विन 3-0 भाई. दैट इज माय प्रेडिक्शन, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट इज 2-0 और 3-0 टू यूनाइटेड आल्सो. और वेंगर, ओह माय फेवरेट. वेंगर वाला जो पोस्ट था ऐसे करके जो उसने करा था व्हेन ही किक्ड द बॉटल एंड ही वाज सेंट ऑफ. But Arsene Wenger being happy, lifting that golden trophy, there are too many memories of Wenger, man. That smile when we were signing Ozil, that press conference where we signed Sol Campbell from Spurs. So yeah, who are Arsenal's biggest rivals in Europe? देखो, local rivals तो Spurs हैं, historic rivals United हैं, London rivals Chelsea हैं, European rivals I would say Barcelona है. 3-0 Arsenal, no mercy. Let's go guys, no mercy. Golden Premier League, even though I was 4 months old. If you've seen that, देखो, there is an entire Invincibles documentary up on YouTube. You can see that entire Invincible season, but it was a beautiful moment. Because उस season से पहले आर्सन वेंगर ने बोला था, I think this team can go undefeated, and nobody believed it, and then eventually धीरे-धीरे ओजिल की याद दिला दी. भाई आप लोगों को याद है क्या हाइप हुई थी भाई जब ओजिल ने साइन किया था आर्सेनल के लिए? He was the first superstar we signed in the Emirates era, I would say. Where can Kane go in the summer? Back to Tottenham. Bhai. I don't think he's leaving. Madrid made a bad mistake of selling him. Ozil. Yeah, man. I think Ozil at Madrid was different gravy. We got a few good years out of Ozil, but then it just sucked eventually. And it was a terrible end to a great guy ka career at Arsenal. But hota hai, this is football. This is what happens. Anyways, before I leave, do you guys have anything to talk about? Do you want to talk about anything, football, non-football? We'll stick for 15 more minutes and then um, we'll move. I'll move at least. आप लोग अपनी जिंदगी जियो. As a United fan, my favorite moment was Arsenal was हाँ ठीक है. मुझे लगा यार United के Arsenal के अगेंस्ट इतने सारे moments है ना. Will Insta DM for book recommendations. Yeah, of course, Evan. Don't hesitate at all. Shoot me a DM whenever you have to. If you guys want to follow me on Twitter or Instagram, you can do this. My Twitter or Instagram is the same handle at Global Waffles. I'd love to connect with you. I try. Please, देखो, I appreciate some of you sending me reels, but too many of you send me reels. And sometimes I don't have the time to see all these reels. So don't get disheartened if I don't respond to you, bhai. But I try. Bro, Emirates sponsors Arsenal or they have some stakes in the club. They are just our stadium sponsors, bhai. That's it. No stake in the club, just the stadium sponsor. अभी उनका आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला है ना. 2025 या 2026 में खत्म हो जाएगा. So let's see if we renew with Emirates, if they pay us a lot of money, or we get new stadium sponsors. दक्ष भाई मैंने भी 70 बुक्स पढ़ी है. अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया यार.
बहुत ही बड़ी 70 डेज बुक पढ़ी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा प्लान है हर हफ्ते एक बुक पढ़ना है, तो दैट विल बी 48 बुक्स इन 1 ईयर। Madrid selling world class midfielders to Arsenal. Long may it continue, my friend. Long may it continue. अभी तक मेरा 1.5 year का फेवरेट मोमेंट था व्हेन वी वन अगेंस्ट वुल्स। अरे हाँ भाई, वो भी देखो, इफ यू वांट टू वॉच अ ग्रेट गेम अबाउट आर्सेनल ना, वॉच द आर्सेनल वर्सेस स्पर्स 4-2 इन द नॉर्थ लंदन डर्बी, जिसके अंदर ओबामियांग ने गोल मारा था, स्पर्स ने 2 मारे, लाका ने इक्वलाइज किया। नहीं नहीं नहीं, 4-2 आर्सेनल नॉर्थ लंदन डर्बी देखना, दैट वाज द मोस्ट इंटेंस गेम। और नॉर्थ लंदन डर्बी, इट्स अ लव स्टोरी, यस। Daksh bhai, can't wait for Champions League theme song at the Emirates. Bhai, I can't wait, bhai. Tuesday and Wednesday nights have been so long gone from the Emirates, bhai. It's time, bhai. It's time. 70 डेज, अच्छा। ओ, मेरे को लगा आपने 70 दिन एक्चुअली बुक पढ़ी है। ओहो, 70 डेज बुक का नाम है। सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता कौन सी बुक है। अरे यार प्लीज भाई। हेलो हेलो मेगा गेमर, हाउ आर यू? आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड प्रेडिक्शंस। अभी तो उसमें टाइम है यार, जब वो गेम आएगा देन विल मेक दोस प्रेडिक्शंस ना। फेवरेट फुटबॉल मोमेंट, फेवरेट फुटबॉल मोमेंट, यार आई थिंक रिसेंटली मेसी विनिंग द वर्ल्ड कप। याद है लेस्टर जब प्रीमियर लीग जीती थी, उसमें हमने लेस्टर के अगेंस्ट खेला था, एंड उसमें वेलबेक ने आके जो हेडर मारा था, उसमें उसने बोला था, पीटर ड्रूरी वाज लाइक, आर्सेनल टेकिंग द कॉर्नर, इट्स हियर्स ओजिल स्टैंडिंग ओवर इट, एंड वेलबेक, देयर्स योर फेयरी टेल। एंड उस टाइम हर आर्सेनल फैन को लगा था हम जीतने वाले हैं भाई। दक्ष भाई, एनी प्लान ऑफ सेलिंग ओडेगार्ड टू मैड्रिड? नो प्लान, नो प्लान। Torreira scored in that 4-2. Are you a student? And if you are, I am doing my PhD, so I'm a researcher. 5-2 NLD when we came back from 2-0. Yes, yes, yes. That 5-2 was also insane. That 5-2 game against Chelsea was also really good, man. जब Van Persie ने ऐसे ऐसे गोल मारा था. How does it feel seeing Auba in Chelsea colors? Not bothered. Never bothered about it. बंदे ने अपनी legacy खुद खराब करी है. कुछ कर नहीं सकते हम उसका. Guess 4-2 is that Eric died. हाँ 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 हाँ. फिर Ramsey ने भी did Ramsey also score in that game? नहीं, Ramsey didn't score. So the highlights, yes. यस यस यस, जिरू की स्कॉर, जिरू का भी गोल था लेस्टर के अगेंस्ट, 3-2 जीते थे हम वो गेम, मेरे को याद है। सच पॉइज, सच नॉइज, दीज आर शोल्डर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मेरे को याद है। ही इज अ पोएट, यस दैट्स ट्रू मैन। दक्ष भैया, फॉर whom you have a softer corner, मेसी और रोनाल्डो? यार सॉफ्टर कॉर्नर क्या होता है? लव बोथ ऑफ देम भाई। मैं कौन से कॉर्नर को ऐसे करता हूँ, ये थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है? नहीं नहीं, आई लव बोथ ऑफ देम यार, आई कांट चूज, जनरली कांट चूज। आर्सेनल को एफए कप में भी सिटी मिल गई है, और यूनाइटेड की किस्मत देखो, सिटी कारबाओ से बाहर हुई होंगी। यार कोई बात नहीं यार, द मोर वी प्ले देम, देखो, आई थिंक इट्स एक्चुअली अ गुड ड्रॉ अमन। The more we play them, and I think we'll field a very competitive team for them. The more we play them, the better it is for us. We'll get used to their intensity. We'll get used to the fact how they play against us and how we play against them, and where we can exploit them. वेलबैक, नहीं, हाँ, वेलबैक ने लास्ट मिनट में मारा था लेस्टर के अगेंस्ट। एक जिरू ने भी मारा था, ओपनिंग गेम ऑफ द प्रीमियर लीग था, हम 2-0 हारे थे और 3-2 आई थिंक हम जीत गए थे फाइनली, ऐसे कुछ था। Too far to think about. Oh, my favorite footballing moment. Watching Auburn Chelsea is so sad. He and Leno dragged us through the tough times. It's sad, dude, but he did what he did, right? He took a financial decision, and this is how it worked out. Who are your top 5 greatest footballers of all time? Okay. There's Messi, there's Ronaldo, there's R9, Ronaldinho, Cruyff, Cafu, Roberto Carlos, Zidane. सो मेनी प्लेयर्स, आप कैसे रोक सकते हो एक दो पे, राइट? 5 तो बहुत ही मुश्किल है। आकर्षण, लेट हो गए आकर्षण। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, होता है। आर्सेनल कैन स्कूल सिटी होपफुली मैन। आर्सेनल वाला सिटी। ये वारा वूरा रिज विज मुझसे नहीं होता यार। लक्ष्य भाई, योर रिव्यू ऑफ वीडियो ऑफ आर्सेनल वर्सेस चेल्सी वाज अ बैंगर, नथिंग पर्सनल। यस यस, ओबा, नथिंग पर्सनल।
Sidestepping one, sidestepping two, rest is history. Sidestepping one, sidestepping two. Oh, brilliant. My favorite Arsenal moment coming from 2-0 behind against Hull. Yes, that's what I was. Cazorla की free kick थी एंड फिर किसने गोल मारा था? जिरूर ने रैमजी को सेटअप किया था ना? हाँ। नो थियरी ऑन ऑफ कोर्स यार, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 5 में से कैसे चूज कर सकते हो? मैं अपने बायस ले आऊंगा तो इयन राइट भी होगा उसमें से, डेविड रॉकैसल भी होगा। वेयर विल यू रैंक ऑनरी? अरे यार, अब मैं ऐसे 16 बोल दूं तो आप मुझे पूछोगे और 15 कौन से है बेटर ऑनरी से? ये सब रैंकिंग शैंकिंग मुझसे नहीं होती भाई। जस्ट एंजॉय द प्लेयर्स डूड। आई मीन, आप कैसे बोल सकते हो ऑनरी इज बेटर देन क्राइफ और क्राइफ इज बेटर देन ऑनरी? किस बेसिस पे बोल सकते हो? मुझे तो क्राइफ बहुत पसंद था। आई लव्ड ऑबैट आर्सेनल भाई। ही सिंगल हैंडेडली केप्ट अस अलाइव। ही टुक अस थ्रू द डार्क मोमेंट्स एंड आई थिंक ही लव्ड हिज टाइम एट आर्सेनल भाई, वरना उसने टैटू नहीं कराया होता। टोनी एडम्स इज लव। आकर्षण, कैसा लगा नया आर्ट वर्क जो स्टेडियम पे बनाया सारे लेजेंड्स का? वेंगर भी है, जॉर्ज ग्रेहम भी है, हर्बर्ट चैपमैन का भी है, देखा मैंने अपेरेंटली। My favorite shithousery moment will be when Mourinho said Henry scores against small teams, and later when Arsenal faced Henry scored in that match and he was like, yeah, it's true, I only score against small teams. भाई Henry was the biggest shithouse, आप लोगों को पता नहीं है। Dennis Bergkamp, of course. Sorry everyone, I went to Chelsea. माफ नहीं किया जाएगा आप लोगों को, आपको माफ। क्या जाओ फिलिक्स की किसने बताई थी स्टेटमेंट? इट्स माय ड्रीम क्लब। झूठा साला। थियो वॉलकॉट वाज डिफरेंट ग्रेट भाई। आप लोगों को याद है व्हेन वी वर प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी एंड थियो वॉलकॉट को ट्रिप कर दिया था आई थिंक किसी ने, सीधा उठ के स्कोर द गोल भाई। दैट इज माय फेवरेट गोल ऑफ थियो वॉलकॉट भाई। प्राइम सैnchez, प्राइम ओजिल, प्राइम ओबा, प्राइम सैnchez. Who did you really like, my friend? Thierry Henry. Yeah. I love Thierry. Treble or Invincible? Invincible. अच्छा लगा, पर ओल्ड वन वाज बेटर, पर्सनल प्रेफरेंस। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई थिंक ओल्ड वन पे हमारी अडेज थी टू द प्लेयर्स ऑफ दैट टाइम, पेरेज, ऑनरी वगैरह, रीसेंट पास्ट। बट आई थिंक दिस इज जस्ट पुलिंग आउट टू द हिस्ट्री ऑफ एवरीवन। एंड सिंस अब एमिरेट्स स्टेडियम पे विमेंस टीम भी खेलती है, इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी कि हमने विमेंस टीम को भी इंक्लूड किया भाई। अब नेक्स्ट टीम तो बहुत टाइम के बाद होगी ना? नहीं, नॉट नेसेसरली माय फ्रेंड। नेक्स्ट गेम कब है आर्सेनल का? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। देखो, इफ यू गाइज वांट, देखो द प्रॉब्लम इज गाइज, मैं जब काम से फ्री होता हूँ ना, बाय द टाइम आई गेट होम, इंडिया में 12 बज चुके होते रात के। अगर आप लोग आओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे लिए तो इवनिंग है। नेक्स्ट स्ट्रीम वी कैन डू अ stream on Tuesday at this time, 5:30 p.m. talking about the North London derby, looking a little bit ahead to the Manchester. फिर मैनचेस्टर के लिए जो मैच होगा उसमें यूनाइटेड के जो मैच होगा अगेंस्ट, उसके लिए हम एक प्रीव्यू करेंगे, उसमें मोहक भाई के साथ भी होंगे। सो या ओके, नथिंग वैन नथिंग कैन बीट मोरिनियो वर्सेस वेंगर। यस, अरे यार वो बहुत टॉक्सिक राइवलरी थी यार वो। डू बिलीव आर्सेनल कैन विन दिस time? We can, but we won't. It's still a long way to go, as you said, Debanik. It's still a very long way to go. 11 million loan fees, including salary. Arey, bhai, please. This is robbery, absolute robbery. And he's extended his contract, bhai. So either Simeone is leaving or he's just trolling everyone, bhai. Greatest manager for me. For me, it's Arsene Wenger, man. It has to be Arsene Wenger. Walcott hat-trick against when he was fouled, got up, chipped Tim Krul. Yes, that was as well. भाई उसने चेल्सी के अगेंस्ट भी एक गोल मारा था, न्यूकासल के अगेंस्ट भी एक गोल मारा था। Brilliant, absolutely brilliant. Ozil dropping 2 defenders. Yes. Who was he playing against? मैं टीम का नाम भूल गया। But yeah, that was insane. That was an insane goal as well. Martinelli scoring against Chelsea, running the length of the field was amazing. Arsenal current favorite player, mine is Martinelli, mine is Saka and Odegaard. Greatest manager except Wenger has to be either Sir Alex or Ancelotti. I think now to move forward, Arsenal needs to sign some established stars. देखो, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा. I will make this video tonight and I'll publish it tomorrow about how we need to have our Alisson and Van Dijk moment and when do we actually time it. Liverpool were good, but it was not until they signed
Allison and Van Dijk that they became great. And I think यही time आ रहा है where we need to send two very very big players. देखते हैं कब आता है. अभी आप कहाँ हो? मैं आयरलैंड में हूँ भाई, डबलिन में. Harshavin once owned entire Anfield. Taurus Exchange's jersey. याद है? One. नहीं, first was, second was, um, and third was, and fourth was. बढ़िया मैच था यार वो 4-4 जो एनफील्ड पे हुआ था. हम आपके नेक्स्ट स्ट्रीम पे मुद्रिक की अनाउंसमेंट आ जाए. अरे होप भाई होप. आयरन पार्डियो भाई, आयरन पार्डियो का डांस याद है आप लोगों को? लूडो गैरेट्स, यस यस यस. आयरन पार्डियो का डांस याद है आपको? फकिंग इनसेन भाई. ओके, लूडो गैरेट्स असिस्टेड बाय द रियल मो. यस. विलशेयर परफॉर्मेंस वर्सेस बारसा इनसेन यार. जावी ने बोल दिया था. मैंने अपनी वीडियो बनाई है जैक विलशेयर पे, जाके देखो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है. दक्ष भाई, आर यू प्लानिंग टू गो टू द एमिरेट्स? प्लान तो है, टिकट्स नहीं है मेरे भाई. दैट्स द इशू. ब्रिंग इन एम्बापे. यस. दक्ष भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव देयर. यस यस यस. होपफुली आप भी आ जाओ भाई. डीबीएस मेन मास्टर्स. अरे अरे बढ़िया बढ़िया था. अमेजिंग अमेजिंग. हैव अ गुड टाइम. इट्स अ ग्रेट सिटी. इट्स अ ग्रेट सिटी. For Alisson and Van Dijk, Liverpool also sold Coutinho. Who will be our Coutinho? I think we don't have to sell somebody, but we just देखो यार, we were offering 80 million for Rafinha, we were offering 80-90 million for Mudryk. फैंस काफी एक्साइटेड है आर्सेनल को देखने के लिए. प्रोजेक्ट अच्छा है और प्लेयर्स आएंगे अभी. तो यस, लिवरपूल ने काफी सारे प्लेयर्स बेचे थे. वी डोंट हैव टू सेल. आई थिंक हमारा रेवेन्यू इतना हो जाएगा दैट वी कैन साइन अ बिग प्लेयर, एटलीस्ट वन. The best Arsenal match of that 4-2 against Spurs. That 4-2 against Spurs. I was shouting, howling. मुझे मेरे emotions out of control थे उस game में. I stopped following cricket, bhai. I've stopped following cricket. It's just too commercialized for me now. Real more 10 minutes masterclass coming. I think we might end up selling Martinelli for some crazy money. He might end up going to Madrid, but not after 4-5. देखो यार, the guy loves Arsenal. So it's going to take time. Arsenal have been charged for breaching FA rule for failing to ensure. अरे यार, हैं? Are you serious? Renisu, again an FA violation. What can I say? Fuck the FA. Anyways, guys, it's time to end the stream. 2 घंटे हो गए almost. I have to leave. I have to start getting ready for work. बारिश भी हो गई है. Fuck off. But yeah, thank you so much for joining in यार. Like the stream if you haven't. मैंने एक ही बार पहले आपसे like मांगा है. Sell Odegaard to Chelsea if possible. Well, it is impossible, my friend. आपको पेपे चाहिए तो आप पेपे ले लो 50 मिलियन में. खैर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइस. काफी टाइम हो गया भाई स्ट्रीम करे हुए. नेक्स्ट स्ट्रीम होपफुली इट्स गोना बी अ लिटिल सूनर. आई विल बी ऑफ टू लंडन. आई विल सी यू गाइस मे बी आफ्टर लंडन. एंड इफ आई गेट टू सी any sort of build up or atmosphere, then I will share it with you guys in any way possible. Soon, I think next weekend, फिटनेस चैलेंज अपडेट का पॉडकास्ट आएगा विद मोहक, निधि, मानस एंड टीसीएसबी. फर्स्ट चैलेंज इज डन. सेकंड चैलेंज लोगों को मिल चुका है, उस पे भी बात होगी. सो या, see you guys again and good luck to your team this weekend unless your team is Spurs, and as usual, come on you Gunners. Bye.